स्क्रीन विजिबल अच्छी समस्त को क्लियरली? Yes. ओके। तो काली आम पढ़ी प्रेसिडेंट, आज जस्ट सर्ट रे पढ़ा गवर्नर। कहीं प्रेसिडेंट और गवर्नर ऑलमोस्ट सिमिलर, मुझे भाई गोटे क्लास रे पढ़ाई। प्रेसिडेंट पढ़ेला पर गवर्नर किसी डिफरेंस तुमको खाली कहया था। ओके, जहाँ जहाँ सेंटर रे प्रेसिडेंट, सिमिलर थिंग यू विल सी इन स्टेट। ओके, इन केस ऑफ गवर्नर एक्चुअली प्लान थिला गोटे क्लास रे गवर्नर और प्रेसिडेंट, गोटे क्लास रे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। ओके, तो एक्चुअली हो पारानी टाइम, लास्ट क्लास गोटे पेंडिंग रहा, काली आम कले तो आज करदे गवर्नर और सुप्रीम कोर्ट। ओके, एंड हाई कोर्ट जदि नेक्स्ट वीक रे टाइम हम मुझे तुमको एमती सर्ट रे कहीदेवी। ओके, बिकज आम नेक्स्ट पढ़ा मोस्टली पार्लियामेंट नेक्स्ट क्लास ए वीक रे हेनी, नेक्स्ट वीक मोस्टली मंगलवार क्लास हम। ओके, सेम मंगलवार बुधवार गुरुवार। तो जदियो आई थिंक नेक्स्ट वीक आमर पार्लियामेंट अच्छी शेड्यूल रे, पार्लियामेंट तापर अच्छे आमर पंचायत राज म्युनिसिपालिटी शेड्यूल एरियाज। ओके, एगुड़ा पढ़ेला मुझे तुमको हाईकोर्ट कोड गोटे करदेवी कौन में कि पार्लियामेंट एक्सक्लूसिवली गोटे क्लास दरकार। ओके, मुझे तुमको सेंटर टा पढ़ेदेवी, स्टेट लेजिस्लेटर टा एकदम सिमिलर। ओके, हाईकोर्ट टा जदि हम कोटे क्लास रे आम जस्ट देखीदेवा टिके तार, अदरवाइज तुम पढ़ो। बट मुझे ट्राए करी आमर जो पंचायत राज क्लास अच्छी, ओके, शेड्यूल एरिया वाला क्लास अच्छी, गोटा छोट छोट क्लास से कोड हाईकोर्ट आम पढ़ा सेपरेटली। ठीक अच्छे, केवल पार्लियामेंट चैप्टर बहुत बड़, ताकू एक्सक्लूसिवली गोटे क्लास रे पढ़ा। ओके, ठीक अच्छे, स्टार्ट करवा। जी नेक्स्ट जॉइन करो समस्त गवर्नर चैप्टर बाहर कर। वॉइस ऑडियो वीडियो क्लियर? जड़े किए जस्ट, हाँ, गुड इवनिंग गौरव, गुड इवनिंग गायत्री, यस गुड इवनिंग समस्त को गुड इवनिंग। ओके, एंड आई होप ऑल यू आर स्टडिंग वेल। प्रिलिम्स बहुत एग्जाम माने लास्ट मेंस रिजल्ट बहुत पाखापाखि है, तेणु एबेठू पूरा 100% फोकस सहित प्रिलिम्स में पढ़ापढ़ी कर। ठीक अच्छे, ठीक अच्छे, गवर्नर चैप्टर बाहर कर। ओके, चलो विल स्टार्ट। काले हम पढ़ी प्रेसिडेंट। ओके, ही इज द हेड ऑफ द स्टेट। तो सिमिलरली यू विल सी गवर्नर इज द एडमिनिस्ट्रेटिव हेड, ओके, एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। ओके, तो ये स्टार्ट करवा आम कि मु जो जोटा हाइलाइट करी तुम भी हाइलाइट करो, इंपोर्टेंट मार्क करो। ओके, पेंसिल धरिकी बस, अंडरलाइन करो। The Constitution of India envisages the same pattern of government in the state as in the center. Okay, तो जो पैटर्न रो गवर्नमेंट बिकॉज ऑफ आवर फेडरल स्ट्रक्चर, जो पैटर्न रो गवर्नमेंट आम सेंटर रखिछंती, सेम पैटर्न रो गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन रिफ्लेक्ट करूची इवन इन द स्टेट। ओके, so this is the parliamentary system, okay, of the government that we have in the center and we have in the state. Okay, सेठी हमर पार्लियामेंट अच्छी, एठी हमर स्टेट लेजिस्लेचर अच्छी। ओके, पार्ट 6 पार्ट 5 रे हमें पढ़ी थिले एग्जीक्यूटिव बॉडी जति कि हमर पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट, प्रेसिडेंट ए सब अच्छी पार्ट 5। तो व्हेन इट कम्स टू स्टेट इट इज पार्ट 6, मन रख। ओके, स्टेट रो जहाँ बॉडी हम पढ़िबा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, okay, high court, governor, all these things will come under part 6. Okay, it is important of the constitution which deals with the government of the state. Okay, part 6 deals with the government of the state, part 5 deals with the government of center. Okay, then article 153 to 167 देखो एटा एक्चुअली ब्रॉडली तुम मन रखी था, जेमिति कि तमे सेंटर पे मन रखियो आर्टिकल समवेयर फ्रॉम 90s टू जते भी अछि मोर मन नै, सेमतिया मन रखो एतिकी रु एतिकी होची स्टेट वाला आर्टिकल। ओके, ताकि देखो कोन कि तमर जदि एग्जैक्ट भी मन नै, गोटे क्वेश्चन अच्छी प्रिलिम्स रे किछि गोटे सेंटर रो किछि गोटे रिलेटेड क्वेश्चन अच्छी, सेइथरे गोटे आर्टिकल दे दैछि, दिस आर्टिकल आई मीन ए आर्टिकलटा याकू रिप्रेजेंट करूची। तुम जदि जानिछो जे ब्रॉडली भी जानिछो जे एतिकी रु एतिकी आर्टिकल स्टेट बिलोंग करूची। ओके, 153 रु 167 आर्टिकल होची बिलोंग्स टू स्टेट गवर्नमेंट।
ତ ଏଥିରେ ଆଉ କିଛି ରହିବନି ଯଦି ଏଇଥିରୁ କୋଉ ଗୋଟେ ଆର୍ଟିକଲ ସେ ଅପସନରେ ଅଛି ତମେ ଏଲିମିନେଟ କରିପାରିବ। ଏମିତି ବି ଆସେ ବେଳେ ବେଳେ। ଓକେ, ଇଟ୍ସ ଏମିତି ନାହିଁ ଯେ ରାଣ୍ଡମ ମାନେ ଏକ୍ସାମ ଏକଦମ କ୍ଲୋଜ ଆର୍ଟିକଲ ହିଁ ସବୁବେଳେ ପଚାରନ୍ତି, ସେମିତି ବି ନାହିଁ। ଓକେ, ଯଦି ସେଣ୍ଟରର କୋଉ ଗୋଟେ ରିଲେଟେଡ କଣ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଅଛି ସେଇଥିରେ ଷ୍ଟେଟ ରୋଡ ଆର୍ଟିକଲ ମେନସନ ହେଇଛି ତ ତମେ ଜାଣିପାରିବ ବ୍ରଡଲି ଯେ 153 ରୁ 167 ଭିତରେ ଷ୍ଟେଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ରିଲେଟେଡ ସବୁ ଜିନିଷ ଅଛି। ତ ଏଇଥିରେ ଏଇଟା ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନକୁ ହେଇପାରିବନି କି ଏଇଟା ଆଉ କିଛି ବି ଏଥିରେ ହେଇପାରିବନି। ତ ତମେ ଅପସନ ଏଲିମିନେଟ କରିପାରିବ। ଠିକ ଅଛି। So, Article 153 to 167 and Part 6. Okay, this belongs to state government. Okay, in the constitution which deals with the state executive. Then ଆମେ ପଢିଥିଲେ ସେଣ୍ଟରରେ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ବିଲଙ୍ଗ କିଏ କିଏ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭରେ ଆସୁଛନ୍ତି? ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ। ଓକେ, ଦେନ୍ ଆମର ଥିଲା ସେଠି ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟର, ଦେନ୍ କାଉନସିଲ ଅଫ ମିନିଷ୍ଟର, ଦେନ୍ ଥିଲା ଆମର ଆଟର୍ଣ୍ଣି ଜେନେରାଲ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ। ଏଠି ଆମର ଆସିବେ ଗଭର୍ଣ୍ଣର, ଚିଫ ମିନିଷ୍ଟର, କାଉନସିଲ ଅଫ ମିନିଷ୍ଟର ଆଣ୍ଡ ଆଡଭୋକେଟ ଜେନେରାଲ। ଓକେ, ସେମ୍ ଥିଙ୍ଗ ମୁଁ କହିଲି ନା, ତମେ ଯଦି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଚାପ୍ଟରକୁ ରିଭାଇଜ କରିବ ନା ସେତେବେଳେ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଚାପ୍ଟରକୁ ବି ରିଭାଇଜ କରିବ, ତାହେଲେ ତମକୁ କନଫ୍ୟୁଜନ ଆସିବନି ବେଶୀ। ଓକେ, ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ଇଜି ହବ। ତ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭରେ କିଏ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ସେମ୍ ଲୋକ ଷ୍ଟେଟରେ ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆସିବେ ଷ୍ଟେଟ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭରେ। ଠିକ ଅଛି। एंड देर इज सेंटर आउ जड़े था किए भाइस प्रेसिडेंट। ओके, ये जेहेतु किए भाइस गवर्नर ना स्टेट रे से स्टेट रे किए भाइस गवर्नर कह एक्जिक्यूटिव बॉडी रे ना। तो सेंटर रे किए आसीबे प्रेसिडेंट, भाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड अटॉर्नी जनरल है। स्टेट आसीबे किए गवर्नर, देर इज नो भाइस गवर्नर, सो चीफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ओके, देन एडवोकेट जनरल। करेक्ट, ये तुम मन रख। They are the executive body. Okay, the governor then the governor is the chief executive head of the state. Okay, ଯେମିତି କି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଥିଲେ ସେଣ୍ଟରରେ ଚିଫ୍ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ହେଡ୍, ସେମିତିଆ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ହେଉଛନ୍ତି ଗଭର୍ଣ୍ଣର ହେଉଛନ୍ତି ଚିଫ୍ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ହେଡ୍। एंड सेंटर थिले ही इज आल्सो द नॉमिनल एग्जीक्यूटिव, हियर आल्सो गवर्नर इज द नॉमिनल एग्जीक्यूटिव। ओके, एठी रियल एग्जीक्यूटिव किए? चीफ मिनिस्टर। से रियल एग्जीक्यूटिव किए थिले? प्राइम मिनिस्टर। ओके, ही आल्सो एक्ट एज एन एजेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। बट एक्चुअली देखो ये स्टेटमेंट बेले बेले देई थाए कोन ऑप्शन रे कि कॉन्स्टिट्यूशन मेंशंस दैट गवर्नर इज द एजेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। नो, कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट मेंशन दैट ही इज द एजेंट, बट यू नो कि गवर्नर एक्ट्स एज एन एजेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके, आमे जानि छंती गवर्नर एक्ट्स एज एन agent of central government, but actually he is not the agent according to constitution. Okay, and he has dual role, therefore he has dual role. He act as an agent and he act as an executive head of the state also. Okay, state government. हाँ, आउ कौन थिला? सेवेंथ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पूर्व थिला कौन? 1956 पूर्व कौन थिला? A one person cannot be governor for two states. Okay, after seventh constitutional amendment act 1956 कौन करिछि कि one person can be appointed as a governor for two states. Okay, मे बी तुम देखिथिबो बेले बेले थाए बिहार रो गवर्नर, ही इज आल्सो द गवर्नर ऑफ झारखंड। ओके, तांको डीटा स्टेट रो चार्ज दिया थाए अनलेस अंटिल यू अपॉइंटेड another person for the government governor of another state. Okay, तो जणे पर्सन दीटा स्टेट रो गवर्नर हेई परिबे, राइट? दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट यू रिमेंबर एभला ही स्टेटमेंट से पचारती। ओके, ए सिंगल पर्सन कैन नॉट बी ए गवर्नर फॉर टू स्टेट्स, दिस इज रॉन्ग। ओके, दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, वन पर्सन कैन बी गवर्नर फॉर टू स्टेट्स। देन अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर केमिति अपॉइंट हुअन्ति तुम जानिछ, तांको किछि भोट फोट किछि हुएनी, नाइदर ही इज डायरेक्टली इलेक्टेड नॉर ही इज इनडायरेक्टली इलेक्टेड। ओके, प्रेसिडेंट वाज इनडायरेक्टली इलेक्टेड, I mean, Podle president is indirectly elected, but governor is not at all elected. He is appointed by the president under his hand and seal. Okay, by a warrant under his hand and seal. Okay, and held the he was the nominee of the central government, but as held by Supreme Court in 1979, the office of governor of a state is not an employment under the central government. It is an independent constitutional office. Okay, and is not under the control or subordinate to the central government. ओके, आमे पूर्व पैराग्राफ रे कोन पढिथिले कि ही एक्ट्स एज एन एजेंट लाइक एजेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, बट सुप्रीम कोर्ट कोन कहउछि अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन it is an independent constitutional office. Governor's office is an independent constitutional office and he is not under the control or subordinate to the central government, right? Then
ओके देन सी केमिति नॉमिनेट होचंदी कोन होचंदी दिस इज नॉट वेरी इंपोर्टेंट ओके एंड आमर गवर्नर होचंदी लाइक कैनेडियन मॉडल ओके नॉट लाइक यूएस मॉडल कैनेडियन मॉडल ले कोन हुए where the governor of the province is appointed by the governor general and was accepted by the constituent assembly okay US रे कोन हुए where the governor of state is directly elected okay US रे governor directly elect हुएंती state रो but we adopted the Canadian model where we are appointing the governor which is accepted by the governor general in USA here by the central government sorry in Canada here by the central government okay ଆମ ଦେଶରେ ଆମେ ତାକୁ appoint କରନ୍ତି which is accepted by central government ହିଁ appoint କରନ୍ତି ଆଉ indirectly देन तांकर क्वालिफिकेशन कौन रहा दरकार प्रेसिडेंट रो आम क्वालिफिकेशन देखी कि तांको 35 इयर्स ऑफ एज होया दरकार देन ही शुड बी ए सिटीजन एंड ही मस्ट बी एलिजिबल टू बी इलेक्टेड टू द लोकसभा राइट एंड नो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट एटी कौन गवर्नर केस रे ही शुड बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया he should have completed the age of 35 years okay but there is no condition ki he must be eligible to be elected to the state legislative assembly or parliament or anything okay there are only two conditions ki se citizens of india hithiar achi eti tame difference man rakho there was another condition for president ki he must be eligible to be elected to the lok sabha here no such condition is there for governor only age 35 years and citizenship indian citizenship there are two conventions means agreement okay कि गोटे आमे माने the parties are agreed to certain things कि he should be an outsider okay he should not be from the same state for example a person from Odisha should not be the governor of Odisha and while appointing the governor the president is required to consult the chief minister of the state concerned okay for example ଆମର जे गवर्नर अछंती तांकर अपॉइंटमेंट टाइम रे प्रेसिडेंट शुड consult our chief minister okay and he should not be from our state itself right these are two conventions okay माने just agreement कि हमें या को follow करिवा कोई then condition of governor office same आम पढ़िथिले president ପାଇଁ कि सी office of profit होल्ड करू नथिबे सी कोनोसी मेंबर हे नथिबे पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली रो जदी हेथिबे तांको छाडियार अछि द डे ही enter the governor's office he has to leave all this his what membership in either in parliament or state legislature then he should not hold any office of profit okay he is entitled to stay in the governor's house without rent okay then he is entitled to allowances emoluments and privileges all these things okay एवडा जस्ट तमे गो थ्रू हे जिवो these are not very important तांको कोन कोन अछि माने once somebody becomes a governor what are the facilities he has given and what are the things I mean the conditions that he should not do this and do that okay one is office of profit and another is he should not be a member of either parliament or state legislative assembly if he is or she is then he has to leave the membership once he enter the governor's house right then तांको पई कोन कोन सुविधा अछि दैट्स इट से लिखा है ओके तांको पई क्वार्टर अछि जो गवर्नर्स ऑफिस अछि राज मान राजभवन अच्छी अलाउंसेस वगैरह अच्छी okay all these things then oath okay president was also given oath by whom president को किए oath दियंती Chief Justice. chief Chief justice of Justice. india right supreme court okay here also similarly the oath is administered by the chief justice of high court okay of the concerned state माने हमर जे गवर्नर सी तांको ओथ किए दबो चीफ जस्टिस ऑफ ओडिशा हाई कोर्ट ओके और तांकर एब्सेंट रे सीनियर मोस्ट जज ऑफ द हाई कोर्ट राइट then term of governor office okay we know it has he or she has 5 years term okay this term of 5 years is subject to the pleasure of president okay pleasure of president माने कोन कहितली काली कि president can remove you anytime okay you have the 5 year term but it is not like the president cannot remove you without some kind of criteria there is no criteria president can remove you whenever he is think that you are unfit or there is the condition okay तो प्रेसिडेंट रो प्लेजर रे रुहंती सी तो प्रेसिडेंट तांको केतळे भी चाहिले रिमूव करि परिबे ओके एंड द अदर थिंग इज ही कैन आल्सो रिजाइन एट एनी टाइम बाय एड्रेसिंग द रिजिग्नेशन लेटर टू द प्रेसिडेंट ओके
प्रेसिडेंट जो रिजाइन करती क्या रेजिग्नेशन लेटर दियंती if president Vice resigns, Vice President. vice president, right? But here you remember governor will give his resignation letter to the president. Okay, there is no vice governor in state, and also he will not give resignation letter to chief minister. Okay, this is a mistake lot of people will do. You just remember this is important. Whenever governor will resign, he will give resignation letter to the president. Okay, because president appoints him. Like that, you just have to remember. Okay. Uh, then Supreme Court held that the pleasure of the president is not justiciable. Okay, that the governor cannot go to court against the removal of that governor post by the president. That is called as justiciable. Justiciable means when you can go and challenge the decision of the president. Okay, you cannot go and challenge, so it is not justiciable. The governor has no security of tenure and no fixed term of office. Okay, if you are a governor, the term is 5 years, but it is not fixed because you are under the pleasure of president. Okay, president can remove you whenever he wants. Okay, that's why there is no fixed term of office. Okay, the constitution does not lay down any grounds upon which a governor may be removed by the president. Okay, this is also important. You just remember that there is no such ground mentioned by the constitution for the removal of the governor. Okay, president ko pai gotte ground achi. What is that ground that president can be removed? Impeachment. No, no. Impeachment is the procedure. Vi- Yes. Violation of the Violation constitution. of Violation of constitution. violation Okay, of constitution. violation of constitution. तो सेमती गवर्नर किसी ग्राउंड ना ओके कि ए ग्राउंड रे तुम बाहर कर पारिबो देयर इज वन ग्राउंड फॉर प्रेसिडेंट देयर इज नो ग्राउंड फॉर गवर्नर ओके दीज आर द डिफरेंसेस यू हैव टू रिमेंबर and same thing president also can hold his office beyond his term of 5 years until there is no successor. So similar thing is also for governor. Okay, he can also hold the office unless and until there is a successor. Okay, then एगुड़ा बाकी जिनस तुम देखिबो. Then we will go to the power and function of governor. Okay, same thing we have studied for president also: executive power, legislative power, financial power. But there are some extra powers for president. Okay, like military power. Okay, then we have ଆଉ କ'ଣ power ଥିଲା president ପାଇଁ जोड़ा governor ପାଇଁ ନାହିଁ? Diplomatic power. Military power. Military, diplomatic. All these powers are exclusively for president. Okay, not for governor. Governor has only these powers: executive, legislative, financial, and judicial. Okay, same powers. There is no difference. Whatever you have studied for president, exactly same thing governor has. Okay, केवल टिके टिके डिफरेंस अच्छी एक्स्ट्रा कोड किछि अच्छी देखो प्रेसिडेंट को पाई दिस पावर इज नॉट देयर ही गवर्नर हैज दिस पावर की ही कैन अपॉइंट ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर इन द स्टेट्स लाइक छत्तीसगढ़, Jharkhand, Madhya Pradesh, and Odisha. Okay, only these 4 states. You just remember. The governor can appoint tribal welfare minister in the state of Chhattisgarh, Jharkhand, Madhya Pradesh, and Odisha. 4 states. This is important. You just remember. Okay, because they are tribal dominated states. Right. So governor has the power to appoint tribal welfare ministers. This is important. जोड़ा important mark करिछि बाकी जोड़ा same no need to आमे ताकू रिपीट करबा नै एठी. Okay, then एटा भी president can impose president's rule. Okay, similarly governor can recommend the imposition of constitutional emergency in a state to the president, which is called as president's rule. ओके, प्रेसिडेंट पाखे कौन पावर थिला? नेशनल इमरजेंसी. गवर्नर पाखे कौन पावर अच्छी कि ही कैन रिकमेंड द इम्पोजिशन ऑफ ही कैन नॉट इम्पोज, ही विल रिकमेंड टू द प्रेसिडेंट for the imposition of constitutional emergency in a state. Okay, which is called as president rule. President only can impose, just remember, governor cannot impose the emergency in a state. Okay, he will have to recommend it to the president. This is also important, this you have to mark. Then he act as a chancellor. This also you know. Okay, see sabu jete state re university thanti. This is a ex post facto post. Okay, सी virtually सेमानंकर chancellor हेक रहंती. जी गवर्नर रहिबे
सी आमर जेते स्टेट यूनिवर्सिटीज अच्छी ओके तांकर सी एटा हूँ एक्स ऑफिशियो पोस्ट सी तांकर यूनिवर्सिटी चांसलर होकर रहे एटी हूँ एक्सट्रा बाकी ऑल दिस थिंग्स आर सिमिलर ओके लेजिस्लेटर से भी जमी आमर थिला पार्लियामेंट रो प्रेसिडेंट होचंदी गोटे इंटीग्रल पार्ट हियर आल्सो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली रो गवर्नर होचंदी गोटे इंटीग्रल पार्ट ओके गवर्नर देन आमर रहिला स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एंड जो स्टेट रे अच्छी स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल ओके हाँ एटा गोटे सेपरेट पावर तांको अच्छी ही नॉमिनेट्स 1/6 member of the state legislative council okay from amongst the persons having special knowledge or practical experience in literature science art cooperative movement and social services okay एथिरु सी 1/6 member appoint करि परिवे nominate करि परिवे सॉरी to state legislative council जो स्टेट अच्छी आम ओडिसा रे नाही ओडिसा हैज प्रपोज्ड ओके ओडिसा प्रपोज करछि पार्लियामेंट को कि आमर भी स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल बना जाऊ बट ए पर्यंत ओडिसा रे नाही ओके ओडिसा रे केवल स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली अच्छी बट देयर इज नो काउंसिल ओके जो स्टेट रे काउंसिल अच्छी तार 1/6 मेंबर को गवर्नर नॉमिनेट कर परिवे ओके देन एडा में काली भी पढ़ी या तो आई थिंक इमरजेंसी चैप्टर रे पढ़ी ओके कि रिजर्व करि परिवे से किछटा बिल ओके गवर्नर कैन रिजर्व सर्टेन बिल्स फॉर द कंसीडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट एडी भी से लिखाई छी ओके कि को कंडीशन रे से रिजर्व करे बिल अगेंस्ट द इफ ए बिल इज अगेंस्ट द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन okay or if the bill is opposed to the DPSPs okay or it is against the larger interest of the country or of grave national importance a related kiछि भी bill जदि state legislative assembly रे आसुछि then governor is entitled to reserve those bills for the consideration of the president and procedure हम जानिथिले कि गोटे होचंदी कोन आइदर प्रेसिडेंट तांकू विथहेल्ड करि परिवे कंसेंट दे परिवे एंड रिटर्न करि परिवे जदि रिटर्न बिल स्टेट को आसिला पुणी पास है कि प्रेसिडेंट को पाखु गला देन ही इज आई मीन दैट इज नॉट बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट टू गिव हिज असेंट टू द बिल ओके प्रेसिडेंट चाहिए तांकर असेंट दे परिवे परमिशन दे परिवे न दे परिवे इवन इफ रिटर्न जदि गला ओके फाइनेंशियल पावर सेम थिंग बजेट प्रेजेंट करिवे ओके मनी बिल को सी इंट्रोड्यूस हवा आगु प्रायर रिकमेंडेशन निया जिवो गवर्नर जेमती कि सेंटर रे होथिला मनी बिल इंट्रोड्यूस करिया आगु प्रेसिडेंट को रिकमेंडेशन निया होथिला प्रायर रिकमेंडेशन ओके एठी गवर्नर सी एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जोटा कि बजेट प्रेजेंट करंती ओके ये प्रेजेंट करिवे स्टेट हमर विधानसभा रे गवर्नर ओके देन डिमांड फॉर ग्रांट्स तांकर बिना प्रायर रिकमेंडेशन रे किसी डिमांड हे परिवनी ग्रांट्स पई ओके देन कंटिजेंसी फंड जोटा कि इमरजेंसी फंड सेठरू भी एडवांसेस जा भी दरकार हबो सेटा गवर्नर अलाउ करिवे ओके देन फाइनेंस कमिशन स्टेट फाइनेंस कमिशन ओके सेम थिंग व्हाटएवर this all these things were available to president also in center okay then judicial power ame पढ़िथिले सेठी pardon okay he can grant pardon reprieve respite remission and punishment of or suspend okay remission of punishment or suspend and this commute a power da president ko thila similar meaning similar thing for the governor also there are only few exceptions okay कि सी डेथ सेंटेंस को पार्डनिंग करि परिवे कंप्लीटली पार्डन करि परिवे नाही गवर्नर ओके मिलिट्री जोटा कि हमर कोर्ट रो डिसीजन को गवर्नर किसी ता ऊपर डिसीजन नहीं परिवेनी ओके इनते दि तीनटा छाडले बाकी सेम थिंग फॉर प्रेसिडेंट एंड गवर्नर आल्सो ओके आउ कोन एठी अछि एक्स्ट्रा जुडिशियल पावर पढि ताको हम देखि देबा ओके गवर्नर is consulted by the president while appointing judges of the concerned high court okay while appointing the judges of supreme court no governor is consulted but while appointing the judges of state high court governor is consulted by the president okay next he makes appointments postings promotions of district judges in consultation with the state high court okay district judge manangara posting appoint सब करंदी से with concerned high court ro consultation रे then he also appoints person to the judicial service of the state right these three are separate I mean obviously oda state ro hochi to eti governor consultation rahbo then एडा हमें पढ़ी प्रेसिडेंट और गवर्नर विथ रिगार्ड्स टू मनी बिल कार सेम पावर ओके केवल एटी कोनटा एक्स्ट्रा हबो कि गवर्नर किछरा बिल रिजर्व करि परिवे
ओके से रिजर्व बिल टाकू सी प्रेसिडेंट को पाखु पठेबे बाकी एवरीथिंग हैज सेम मनी बिल केस रे भी दिजन जगर पावर ऑलमोस्ट सेम ओनली थिंग इज सर्टन मनी बिल्स विल बी रिजर्व बाय द गवर्नर फॉर प्रेसिडेंट राइट ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर एटा भी हम देखिथिले जेतला सेशन न थाए ओके जेमति का पार्लियामेंट रो सेशन जेतला न थाए सेतला ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर थ्रू रे ऑर्डिनेंस थ्रू रे किसी लॉ बनै परिबे प्रेसिडेंट सेमिति जेतला स्टेट रो सेशन न थाए ओके सेतला गवर्नर बनै परिबे सर्टन केस अच्छी किछिटा केस एठू आस कि governor cannot make ordinance without the instruction of the president in these cases okay এটা কিছু exception ଅଛି ଦି ତିନିଟା case ଦେଖିଦବ just ଏଠି okay if a bill containing the same provisions which would have required the previous sanction of the president for its introduction into the state law जो माने एमितिया किछि बिल अछि फॉर एग्जांपल मनी बिल ओके जो थिरे कि प्रेसिडेंट रो प्रायर रिकमेंडेशन दरकार से बिल गवर्नर कैन नॉट ब्रिंग थ्रू ऑर्डिनेंस ओके जो बिल पाई कि प्रेसिडेंट को प्रायर परमिशन दरकार से बिल को गवर्नर ऑर्डिनेंस थ्रू रे आनी परिबेनी बुझिलो देन सेकंड इफ यू वुड हैव deemed it necessary to resolve a bill containing the same provision for the consideration माने जो बिल तांको लागिवो कि मु ए बिल रिजर्व करिथांती प्रेसिडेंट को पाई से बिल ऑर्डिनेंस थ्रू रे आनिया पे स्टेट मते कहूची देन ही आल्सो विल नॉट ब्रिंग दैट बिल थ्रू ऑर्डिनेंस थर्ड इफ एन एक्ट okay of the state legislature containing the same provisions would have been invalidated without receiving माने इमिति किछि जिंस स्टेट गवर्नमेंट आनिया पे चाहूची जोटा कि प्रेसिडेंट को पाखु जाइथिले सेटा को इनवैलिड कर दै थांदे सेटा को हमें ऑर्डिनेंस थ्रू रे आनिया पे चाहूचंदी तो सेटा भी से करिवेनी ओके सो थ्री एक्सेप्शंस कोन कोन जोटा कि फर्स्ट ऑफ ऑल माने किछि प्रेसिडेंट को प्रायर रिकमेंडेशन दरकार थिला ए बिल पई सेटा ऑर्डिनेंस थ्रू रे आसीबोनी जोटा कि किछिटा जिंस अछि बिल रे जोटा कि प्रेसिडेंट को पाखु रिजर्व माने गवर्नर रखि थांदे रिजर्व करिकि प्रेसिडेंट को पाखु पठै थांदे सेटा भी आसीबोनी आउट जोड़ा अछि जोटा कि प्रेसिडेंट को पाखु जाइथिले सेटा को इनवैलिड कर दै थांदे सेटा को भी से ऑर्डिनेंस थ्रू आनिबेनी बाकी सब जिंस व्हिच इज अंडर द स्टेट गवर्नमेंट ही कैन ब्रिंग थ्रू ऑर्डिनेंस ओके सेम पार्डनिंग पावर मु तुमको देखैली हैला गवर्नर कौन करि परिबेनी ही कैन नॉट पार्डन ए डेथ सेंटेंस मु तुमको कहली गोटे डेथ सेंटेंस को कंप्लीटली फ्री करि परिबेनी गवर्नर ओके प्रेसिडेंट चाहिए जेम तमु मु गाली कहथली राजीव गांधी मर्डर केस रे जो मान कन्विक्ट अछंती ओके तांको एबे पार्डनिंग पावर पई रिक्वेस्ट कराइछि प्रेसिडेंट को बट सिमिलर थिंग गवर्नर कैन नॉट डू ओके ही कैन नॉट पार्डन ए डेथ सेंटेंस पार्डन मींस कंप्लीटली फ्री कर दवा जाऊ हैला even if a state law prescribes for death sentence the power to grant pardon is lies with president okay जदि state government रो या तो state रो को law for example हमरो एबे जो अच्छी सेक्सुअल हारासमेंट केस रे ओके रेप केस रे जो डेथ सेंटेंस अच्छी जदि जण को मिलुची ताकू भी पालन करिवार पावर केवल प्रेसिडेंट पाखरे अछि ओके जदि आम स्टेट फॉर एग्जांपल ये ऑप्शन टा या कहूची जदि आम स्टेट फॉर एग्जांपल एबे तेलंगाना स्टेट महाराष्ट्र स्टेट किछि किछि करिसंदी सेमानकर निजर स्टेट रो लॉ अछि ओके इन केस ऑफ रेप केस एंड ऑल कि तांके तांको डेथ सेंटेंस दे परिबे तो से केस रे भी जदि जण को डेथ सेंटेंस मिलुची ताकू पार्डन करिवार पावर केवल प्रेसिडेंट पाखरे अछि ओके ताकू कोन करि परिबे गवर्नर सस्पेंड करि परिबे रेमिट करि परिबे कम्यूट करि परिबे ओके डेथ सेंटेंस को बट पार्डन करि परिबेनी माने तार डेथ सेंटेंस को कमे परिबे के दिन पय स्टे करि परिबे ओके टाइम को बढ़े परिबे एवडा करि परिबे कंप्लीटली ताको फ्री करि परिबे राइट आ कोर्ट मार्शल केस जोटा मु तुमको कहली मिलिटरी कोर्ट ओके मिलिटरी कोर्ट रे जदि जण को किछि पनिशमेंट मिलिछि ता ऊपर भी कोनोसी जजमेंट गवर्नर दे परिबेनी दिस पावर इज गिवन टू प्रेसिडेंट ओनली ओके दिस इज नॉट रिक्वायर्ड कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन एटा हम जहां देखिथिले एठी भी तीनटा आर्टिकल अछि ओके देयर मस्ट बी ए गवर्नर एंड देयर मस्ट बी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑल दिस थिंग्स यू रीड देन डिस्क्रिशन ओके मु जेमति काले हम कहिथिले कि प्रेसिडेंट कर किछि भी कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन नाही ओनली ही हैज सर्टेन सिचुएशनल डिस्क्रिशन ओके सिचुएशन डिस्क्रिशन कोन जदि किछि पार्टी मेजॉरिटी रे आसु नांती देन ही कैन अपॉइंट ए प्राइम मिनिस्टर okay then he can dissolve the lower house of the parliament if there is no I mean no party has majority e di tinta tankar constitutional situational discretion achi sorry okay but governor has certain constitutional discretion
Okay, constitution has given certain discretionary power to the governor, so he can take independent decisions in these cases. Okay, कौन से रिजर्वेशन ऑफ ए बिल फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, तांकु जो भी बिल लागिवो जे मुएडा प्रेसिडेंट पाखु पठाया कथा सी पठै परिवे. ओके, दैट इज हिज डिस्क्रिशन पावर, ही इज फ्री टू टेक दैट डिसीजन. सेकंड, रिकमेंडेशन ऑफ द इम्पोजिशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल, तांकु जेतेले भी लागिवो कि स्टेट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन अनुसार चलिनी या तो सेंटर रो किसी डायरेक्शन को वायलेट करूची, देन ही कैन रिकमेंड to the president for the imposition of president rule. That is purely his discretion. Okay, while exercising his function as administrator of an adjoining union territory. Okay, ଯେତେବେଳେ ସିଏ ଧରବେ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି କି ଆମର ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଗଭର୍ଣ୍ଣର, ଯଦି ତାଙ୍କୁ ଆଡିସନାଲ ଚାର୍ଜ ଦିଆଯାଇଛି ଏଜ ଏ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟର ଅଫ ଆଣ୍ଡ ଆଇ ମିନ୍ ଯୋଉ ଦାଦରା ଆଣ୍ଡ ନଗର ହାବେଲି, then also he is having that free hand to exercise his functions as a administrator of the union territory. Okay, these are the constitutional discretionary power. Constitution has given these discretionary power to the governor to take decisions independently. Then another two is determining the amount payable to the government of Assam, Meghalaya, Tripura and Mizoram to the autonomous tribal district council as royalty. Okay, कौन केते टंका royalty दिया हबो तांकर जो autonomous council अछि, he will decide. Okay, seeking information from the chief minister with regard to administrative and legislative matters of the state, this is also his discretionary power. Okay, and apart from that, like president, he also has situational discretion. जदि कि मेजोरिटी पार्टी रूल नहीं ताहले से चीफ मिनिस्टर अपॉइंट करि परिबे. ओके, डिसमिस करि परिबे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को जदि से कॉन्फिडेंस प्रूव करि पार नाहंती. ओके, आउ डिसोल्यूशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इफ द काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर्स हैज लॉस्ट द मेजोरिटी. ए तीनटा जिंस प्रेसिडेंट को भी थिला. Okay, these are the situational discretions president also has, but this constitutional discretions president does not have. Okay, these five constitutional, that's all. तीन चारटा एठी अछि आर्टिकल मन रखिबो. ओके, गोटे पार्डनिंग पावर, गोटे ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर, एडवोकेट जनरल. ओके, सो तीन चारटा आर्टिकल इंपोर्टेंट देखि मन रखिबो सो दैट यू कैन मेंशन देम इन मेंस आंसर राइटिंग. और जदि भी तमर आसुची प्रीलिम्स रे सो दैट यू कैन एलिमिनेट. करेक्ट. So this is all governor chapter. Now we'll see. कार किसी डाउट अछि? डाउट अछि जे कुह, नहले we'll go to Supreme Court. Okay. Take 2 minutes rest. पानी पानी टिके पियो, कौन करो. जदि किसी डाउट अछि पचारो. Otherwise we'll go to Supreme Court. Okay. That Good one evening, bond sir. chapter, it will also take some time. Hello. हाँ, Uh, Good evening, sir. Actually, ଆମର ଯୋଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣରଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ ଯୋଉଟା କହିଲେ ଫାଷ୍ଟ ଆମର ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ରେ ଥିଲା କି ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଯଦି କିଛି ବି ଭାୟୋଲେସନ କରନ୍ତି ତାପରେ ବି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ପନିଶମେଣ୍ଟ କରିହବନି କି ଇମ୍ପିଚମେଣ୍ଟ କରିହବନି ତାଙ୍କୁ. ତ ଆମର ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲରେ ବି ଯୋଉଟା ଯୋଉ କେସଟା ହେଇଛି କାଲିର ନ୍ୟୁଜରେ କି ଆଜିର ନ୍ୟୁଜରେ ଥିଲା ଆମର ସେଇଟା, ତ ସେଇ କେସରେ ଆମେ କଣ କରିବୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣରଙ୍କ ପାଇଁ? कौन ହେଇଛି ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲ ରେ ମୁଁ ଜାଣିନି. କଣ ହେଇଛି? ସେ ଆମର ଜଣେ ଓମେନ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ବେସିସରେ ଜଣେ ଓମେନ ଥିଲେ, ସେ ଜବ ରେ ଥିଲେ ତ ତାକୁ ହାରାସମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ସେକ୍ସୁଆଲ ହାରାସମେଣ୍ଟ. ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ରହିଛି। ହଁ, ନା ଯୋଉଠି ୱେଷ୍ଟ ବି ହେଇଛି ଦେଖ, ବେଙ୍ଗଲ. ତମେ ପଚାରୁଛ ଯେ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ରିମୁଭାଲ କେମିତି ହବ. ଗଭର୍ଣ୍ଣର ରିମୁଭାଲ ପିଓର ଆଣ୍ଡ ପିଓରଲି ବେସ୍ଡ ଅନ୍ ସେଣ୍ଟର ଡିସିଜନ. ओके, गवर्नमेंट ऑफ ଆଜ୍ଞା द सेंटर विल डिसाइड कि तांके गवर्नर को कंटिन्यू करिवे कि ताको रिमूव करिवे. गवर्नर पाई किछि इंपीचमेंट प्रोसीजर नाही. स्टेट चाहिले गवर्नर को बाहर कर परिबो नाही. स्टेट ओनली कैन कंप्लेन. लास्ट टाइम भी जे गवर्नर थिले वेस्ट बेंगल रे जयदीप धनकर एबी जे अछंती वाइस प्रेसिडेंट, देयर वाज ଆଜ୍ଞା कंटिन्यूअस कॉन्फ्लिक्ट. स्टेट गवर्नमेंट आउ गवर्नर भितर कंटिन्यूअस कॉन्फ्लिक्ट हुए होउथिला. बट स्टेट गवर्नमेंट कैन नॉट टेक एनी एक्शन. स्टेट गवर्नमेंट कैन नॉट take any action against governor. Only they can, what they can do is they can go and complain, they can go and file a case in some police station, or they can go and do I mean fight in court. Okay, कि आमर ए डिसीजन को अटके दोचंदी, एटा कर दोचंदी, सेटा कर दोचंदी. All these things he can do, the state government can do, but they cannot remove the governor. जदि सेंटर चाहिबो ताहले का से गवर्नर को बाहर करि परिबे. दैट्स इट. आउ किछि माने एक्स्ट्रा तांग पय नाही. Even you cannot file a सर criminal ସେମାନେ case.
सर ସେମାନେ ଜୁଡିସିଆଲ ଇମ୍ୟୁନିଟି ପାଇଛନ୍ତି ତ ଠିକ ଜିନିଷଟା ସେଇଟାକୁ ଡିସାଇଡ କରିବ ଏବେ ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟ କି ହବ କି ନାହିଁ। କଣ ସାର୍ ଏଇ ଯୋଉ ତାଙ୍କ ଉପରେ କିଛି ବି କରିହବନି ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ତ ସେମାନଙ୍କୁ ତ ଜୁଡିସିଆଲ ଇମ୍ୟୁନିଟି ମିଳିଛି ତ ସେଇଟାକୁ ଏବେ ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟ ଯାହା ଡିସାଇଡ କରିବେ। ସି ମୁଁ ଏଇଟା କହୁଛି ଯେ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ପୋଜିସନ କ'ଣ ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟ କ'ଣ ଡିସିସନ ଆଣିବ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ସେପରେଟ୍ ଥିଙ୍ଗ ବଟ୍ ରାଇଟ୍ ନାଉ ଦ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ପୋଜିସନ ଇଜ ଗଭର୍ଣ୍ଣର କ୍ୟାନ୍ ବି ରିମୁଭଡ୍ ଓନ୍ଲି ବାय ଦ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ, okay, not by the state government. State government cannot take any action. ତମେ ଯୋଉଟା କହୁଛ ଜୁଡିସିଆଲ ଇମ୍ୟୁନିଟି, ଦେ ହ୍ୟାଭ୍ ଦ ଜୁଡିସିଆଲ ଇମ୍ୟୁନିଟି। ତାଙ୍କର ଯୋଉ ପିରିୟଡରେ ସେ ଥାନ୍ତି ଗଭର୍ଣ୍ଣର, ୟୁ କ୍ୟାନଟ୍ arrest them by a criminal case, okay, you cannot put criminal case against them, you cannot arrest them, and even if ତାଙ୍କୁ ତମେ civil case ରେ arrest କରିପାରିବ with 14 days of notice. ଯଦି civil case ତମେ କିଛି ତାଙ୍କର against ରେ ପାଉଛ, then you can file a civil case, but any kind of criminal case you cannot file and you cannot arrest, okay, by the time till the time they are in the governor post. That immunity is given by the constitution itself, okay, constitution ରେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଜୁଡିସିଆଲ ଇମ୍ୟୁନିଟି ଅଛି, ଯୋଉଟା କି ତମେ କହୁଛ କ୍ରିମିନାଲ ଆଉ ସିଭିଲ ଇମ୍ୟୁନିଟି ବୋଥ ଅଛି, ବଟ୍ ସିଭିଲ କେସ୍ରେ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ଫାଇଲ୍ ଏ କେସ୍, ଓକେ, ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ଟେକ୍ ଆକ୍ସନ୍, ବଟ୍ ଇନ୍ କେସ୍ ଅଫ୍ କ୍ରିମିନାଲ, ଯେମିତି ଏବେ ତମେ କହୁଛ ସେକ୍ସୁଆଲ ହାରାସମେଣ୍ଟ ହେଇଛି, ତ ଏଇଟା କ'ଣ କ୍ରିମିନାଲ କେସ୍ ହବା କଥା, ବଟ୍ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ନଟ୍ ଆରେଷ୍ଟ ଦ୍ୟାଟ୍ ପର୍ସନ୍ ଅନଲେସ୍ ଆଣ୍ଡ ଅନ୍ଟିଲ୍ ହି ଇଜ୍ ଇନ୍ ଦ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ପୋଜିସନ୍, ରାଇଟ୍। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର୍। ଆଉ ଫ୍ୟୁଚରରେ ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟ କିଛି ବି କହିପାରେ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ସେପରେଟ୍ ଥିଙ୍ଗ। ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟ କହିପାରେ କି नो 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 ୱିଲ୍ ଚେଞ୍ଜ ଦିସ୍, ସେଟା କିଛି ବି ହେଇପାରେ, ବଟ୍ ରାଇଟ୍ ନାଉ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଦ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ପୋଜିସନ୍, ଓକେ। ନେକ୍ସଟ, ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ୱିଲ୍ ଆମେ ପଢ଼ିବା ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟ। ଏଇଟା ଟିକେ ବଡ଼ ଚାପ୍ଟର, ଇଟ୍ ୱିଲ୍ ଟେକ୍ ମେ ବି 1 hour ସମଥିଙ୍ଗ, ହେଲା। ଏଇଟା ତମେ ବୁଝିଲେ ସେମ୍ ଥିଙ୍ଗ, ହାଇକୋର୍ଟ ୱିଲ୍ ବି ଇଜି, ହାଇକୋର୍ଟ ବି ସେମ୍ ଥିଙ୍ଗ, କିଛି କିଛି ପାୱାର ଏକ୍ସଟ୍ରା ମେ ବି ହାଇକୋର୍ଟରେ ଅଛି, ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ରିଟ୍ ଜୁରିସ୍ଟିକ୍ସନ୍ ହାଇକୋର୍ଟର ଟିକେ ଅଧିକା, ଓକେ, ଦେନ୍ ଏମିତିଆ କିଛି କିଛି ଛାଡ଼ିଲେ ବାକି ଅଲମୋଷ୍ଟ ସେମ୍। ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟ ପଢ଼ିବା। ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟ ସେ କ'ଣ କହୁଛି, ଅନଲାଇକ୍ ଏଇଟା କୋଉ ପାର୍ଟରେ ଅଛି, ଫାଇଭ୍। unlike the American constitution, the Indian constitution establishes an integral judicial system, okay, अमेरिका रे कौन अच्छी सेपरेट स्टेट रो तांकर कोर्ट अलगा, ओके, और तांकर फेडरल कोर्ट अलगा, बट आमर कौन इंटीग्रल जुडिशियल सिस्टम माने सुप्रीम कोर्ट ता तळे ही अच्छी हाई कोर्ट ता तळे सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, ओके, आमर एट कौन एट तुम फेल हेले एट अपील करि परिबो, एट फेल हेले एट अपील करि परिबो, okay, in every case, but in America it's not like that. Certain cases you cannot go to Supreme Court, that will be decided the final authorities तांकर state government रो जो court, okay, जोड़ा को हम हाई कोर्ट कहउछन। सो हमर होची इंटीग्रल जुडिशियल सिस्टम, तांकर होची जुडिशियरी सिस्टम इज सेपरेट, ओके। तो हमर इंटीग्रेटेड कोन सुप्रीम कोर्ट एट द टॉप एंड हायर कोर्ट्स बिलो इट, एंड देयर आर हायरार्की ऑफ सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, ओके। This single system of courts adopted from, एटा भी मन रख, if there is a question in मेंस रे कोन हुए बेल आसे अमेरिकन जुडिशियल सिस्टम इंडियन जुडिशियल सिस्टम कंपेयर करो, ओके, तमे जिंस जानिथिया दरकार कि डिफरेंस कोन, राइट। Okay, the single system of courts, okay, adopted from the government of India Act 1935, this is also important, remember एटा हम कोर्ट वाणी चंदी प्रोविजन डा जो इंटीग्रेटेड जुडिशियरी सिस्टम Government of India Act 1935, okay, it enforces both central law as well as state law। हमर सुप्रीम कोर्ट जो अछि, हाई कोर्ट जो अछि, एमाने सेंट्रल लॉ स्टेट लॉ सबु सहित डील करंती, राइट। इन यूएस ऑन द अदर हैंड, the federal laws are enforced by the federal judiciary and the state laws are enforced by the state judiciary, okay, there is a separate judiciary system in USA, okay, which is called as double system of courts in USA, right। So India, although a federal country like USA, has a unified judiciary system and one system of fundamental law and justice, okay, amar hochi unified judiciary system, integrated judiciary system। The Supreme Court of India was inaugurated on January 28, 1950, okay, this is also important because
आजिकल से बहुत फैक्ट भी पचारुचंती ओके तो दिस आल्सो यू रिमेंबर कि आमर जो सुप्रीम कोर्ट केबे एस्टाब्लिश होईची इनॉग्रेट होईची जनवरी 28 1950 यू जस्ट रिमेंबर ता आगुरु एटा कोन थिला फेडरल कोर्ट एटा केबे आस्थिला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ओके जनरली हम कोन भूल करंती हमको लागे कि सुप्रीम कोर्ट आसी ए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 रे बट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 रे हमर आस्थिला फेडरल कोर्ट okay the court that name is changed to supreme court in 1950 okay? This is also important you have to remember then article 124 to 147 deals with supreme court okay and this is under part 5 okay supreme court organization independence jurisdiction power procedure all these things are dealt in article 124 to 120 sorry 124 to 147 right and parliament is also authorized to regulate their organization their independence okay parliament चाहिले law बने कि तांगर writ jurisdiction को बढ़ाई परिवो तांगर power of appointment जो अच्छी procedure को change करी परिवो okay किछि किछि power parliament को दिया is to regulate एटा तमे मन रखो this is not president okay this is parliament will authorize to regulate certain things of supreme court then composition तांगर कोन जजेस मानकर composition केमति कोन रुहे and तांगर appointment केमति रुहे okay this is important at present supreme court consists of 34 judges एटा मन रखो बहुत फैक्चुअल जिंस आजिकल से माने पचार छथि so this you remember कि एबे केतरा जज अछथि 34 including the chief justice of india okay एटा केबे बढ़ाइछि 2000 आई थिंक 18 या 19 रे बढ़ाइछि 19 रे गोटे एक्ट रे बढ़ाइछि okay and originally the strength of the supreme court was at 8 एटा भी मन रखथा ओरिजिनली केते स्ट्रेंथ थिला 1950 रे 8 तापर सक्सेसिवली बढ़ाइछि और 1956 60 ओके ए सब रे नंबर बढ़े बढ़े नाउ इट इज 34 एंड इंक्लूडिंग सीजीआई ओके अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस एटा मु तुमको जस्ट स्टोरी सुनै दोछि एटा रे लिखाइछि फर्स्ट केस सेकंड केस कंट्रोवर्सी ऑल दिस थिंग्स राइट नाउ द अपॉइंटमेंट इज जस्ट ए चार लाइन पढो मु तुमको बुझे देबी ही शुड the president who is appointing the judges president okay first of all who is appointing the judges president the judges of the supreme court are appointed by the president this statement you remember okay this is important ki appoint karan the president not parliament okay second thing is how there is a system called collegium system ebe joda chali chi amaro okay mu tumku bujhai dochi there is a collegium system okay this collegium system includes cji and 4 senior most judges of supreme court okay yanku neiki tiari hichi collegium system okay the president he means the president should consult a collegium of 4 senior most judges of the supreme court and even if 2 judges gave an adverse opinion he should not send the recommendation to the government okay so kemiti jae gote collegium achanti 5 member body okay 4 senior most judge plus cgi से माने कोन करिवे देखि कि माने सीनियर रिटी देखि कि से माने कोन करिवे जजेस मानकर ना हाई कोर्ट रो जजेस मानकर ना रेकमेंड करिवे गवर्नमेंट को ओके हाई कोर्ट रो जजेस मानकर ना रेकमेंड करिवे गवर्नमेंट को ओके गवर्नमेंट मीन प्रेसिडेंट then the the cabinet will decide okay cabinet decide करिवो then जा ना फाइनल हबो ताकू प्रेसिडेंट को पाखु पठाओ then president will finally appoint this is the procedure this is called as collegium system okay 2014 रे कोन हितिला this 99th amendment act आनिथिला सेंट्रल गवर्नमेंट okay सी फॉर्म करिया को प्रपोज करिथिला नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन एक्ट 2024 okay this was 99th amendment constitutional amendment act एथरे गवर्नमेंट कोन कहउथिला ए जो कॉलेजियम सिस्टम अछि आकु ब्रेक करिकि जजेस मानकर अपॉइंटमेंट रे गवर्नमेंट चाहुथिला लॉ मिनिस्टर ओके एंड प्राइम मिनिस्टर ऑल देम शुड बी इंक्लूडेड इन ए कमिटी गवर्नमेंट चाहुथिला गोटे कमिटी बनिवो सेथिरे 3-4 जण गवर्नमेंट रहइबे और 3-4 जण जुडिशियरी रहइबे they will decide they will propose the name to the central government then it will go to the president and judges will be appointed taku supreme court declare kala null and void supreme court कहला this will hamper the independence of judiciary okay if politicians or executive will interfere in the selection of the judges it will hamper the independence of the judiciary okay so that was declared as unconstitutional okay and void by the supreme court
सो अगेन आमर से पुराना कॉलेजियम सिस्टम कंटिन्यू होची जोटे कि सुप्रीम कोर्ट रो चीफ जस्टिस एंड 4 सीनियर मोस्ट जजेस दे विल प्रपोज द नेम टू द गवर्नमेंट. Okay, government will, I mean the cabinet will decide, then finally president will appoint. This is the procedure right now. ठीक अछि, एटा पूरा स्टोरी से ही लिखा है. ओके, देन क्वालिफिकेशन जजेस मानकर कोन. ओके, a person to be appointed as a judge of the Supreme Court should have the following qualifications. First of all, he should be a citizen of India. Okay, and he should have been a judge of a high court either for 5 years. Okay, or he should have been a advocate of high court for 10 years. Okay, or he should be distinguished jurist as opinion by the president. Okay, either mane, first of all he should be a citizen. Second thing is either he should be a judge of a high court for 5 years, or he should be a advocate of high court for 10 years, or he should be a distinguished jurist. तीनटार को हले गोटे condition with citizenship of India, then he is eligible to be the judge of Supreme Court. Okay, तो ये catch कौन अच्छी देखो, Constitution has not prescribed a minimum age. Like we have studied for president, for governor, the minimum age was 35, right? But for Supreme Court judge, there is no minimum age. This is important. Okay, एटा मन रखो कि there is no minimum age. Only there is a retirement age. There is a maximum age that is 65. I'm देखियो आगु. Okay, the judge should retire, but remember there is no minimum age. Okay, only he should be a citizen of India, and he should have either of the three qualifications. Okay, either he should be a judge or a advocate or a distinguished jurist. Then oath, Supreme Court judge किए oath करांती. A person appointed as a judge of the Supreme Court before entering his office has to make and subscribe an oath or affirmation before the president. Okay, or some person appointed by him for this purpose. Okay, so this is also important. Who will give oath to the judge? President. Okay, then see कौन कौन oath नेबे, this is not important. Okay, salary and allowances एडारे इथरे भी किछि मन रखियार नहीं, खाली एतकी मन रखो all these things are determined by the parliament. Okay, not president. देखो एडी confusion कौन, किछि किछि जिंस parliament करूची, किछि किछि जिंस president करूचन. Okay, appointment will be by president, oath will be by president, but their salaries and allowances will be decided by parliament. Right, this difference you have to remember. कारण एग्जाम रे जितो क्वेश्चन आसीबो ना प्रीलिम्स रे तुमको बहुत कंफ्यूज लागिबो वेदर इट इज प्रेसिडेंट और पार्लियामेंट. सो क्लियरली ताकू नोट रे या तो कोठे लिखि रखो कि प्रेसिडेंट कोन कोन करूचंदी, पार्लियामेंट कोन कोन करूची. ओके, देन टेन्योर, तांगर टेन्योर केते वर्ष थाए कोन एंड से मानु केमिति रिमूव करा जाय. ओके, Constitution has not fixed the tenure of a judge of the Supreme Court. Okay, कि एतिकी वर्ष पय से जज हेबे एमदी किछि tenure fix हेनी. Constitution is not fixed the tenure. Okay, he holds the office, however it makes following three provisions in this regard. कौन कौन provision? He holds office until he attains the age of 65 years. तो तांगर minimum age किछि prescribe हेनी, but maximum age is 65 years. Okay, unless and until you are 65 you can continue as a judge. In 65 years you have to retire. Any question regarding his age is determined by such authority and such manner as provided by parliament. Okay, second, he can resign his office by writing to the president. Okay, Chicago write mane lekhibe tanga resignation letter to president. This is important. Okay, this is also important. This, all these points you have to remember. Then he can be removed from his office by president on the recommendation of the parliament. Okay, this is resignation, this is removal. If he wants, he can resign by writing to the president, and he can be removed by the president also, but with the recommendation of the parliament. There is a procedure, impeachment procedure for judges also. Okay, we'll see what the procedure is, but एतिकी मन रखो कि recommendation दबो parliament and remove करिवे तांको president. Okay, तो resignation ले भी president, removal ले भी president,
बट रिमूवाल रे रिकमेंडेशन दबो पार्लियामेंट, राइट। तीन पॉइंट मन रखियार अछि तांगर मैक्सिमम एज लिमिट 65, तांगु रिजिग्नेशन लेटर देबे से प्रेसिडेंट को, एंड तांगु रिमूव भी करिवे प्रेसिडेंट विथ रिकमेंडेशन ऑफ पार्लियामेंट। ओके, जदि स्टेटमेंट थिबो ही विल बी रिमूव्ड बाय प्रेसिडेंट, इट विल बी करेक्ट। ओके, जदि भी लिखाइनी विथ द रिकमेंडेशन ऑफ पार्लियामेंट, स्टिल द स्टेटमेंट विल बी करेक्ट। देन रिमूवल, ओके, केमिति हमें देखिबा। देयर इज ए प्रोसीजर, ओके, ऑफ इम्पीचमेंट। A act would achieve Judges Enquiry Act, which regulates the procedure relating to the removal of judge of the Supreme Court by the process of impeachment. Okay, there was a impeachment procedure for president also to remove the president. Similarly, there is a impeachment procedure for the judge of Supreme Court also. कौन से procedure? The removal motion signed by 100 members if it is from the Lok Sabha and 50 members if it is from the Rajya Sabha. Okay, to be given to the speaker in case of Lok Sabha and to the chairman in case of Rajya Sabha. So first of all कौन तांको रिमूवल ପାଇଁ जो impeachment motion ଆସିବ जदि लोक सभा रे आसी 100टा मेंबर साइन करथिबार अछि एंड सेटा दिया हबो कागु स्पीकर को। जदि राज्य सभा रे आसी तांकर impeachment motion 50टा मेंबर साइन करथिबार अछि सेटा दिया हबो कागु चेयरमैन। ओके, दिस इज द फर्स्ट स्टेप। Second कौन हबो, the speaker or chairman may admit the motion or refuse to admit. Okay, so it is the prerogative of the speaker, either they will accept the motion or they will reject the motion. Okay, लोकसभा रे स्पीकर और राज्यसभा रे चेयरमैन से चाहिले एक्सेप्ट करि परिबे, से चाहिले रिजेक्ट भी करि परिबे कि ना हमें इम्पीचमेंट मोशन को हमें एक्सेप्ट करिवो नै। ओके, से पावर भी अछि। It is not mandatory, this also you have to remember, this is important, it is not mandatory. Okay, they may or may not admit. Then third, if it is admitted, jodi se admit kale speaker ya to chairman, then what? Then the speaker and the chairman is to constitute 3-member committee to investigate into the charges. Next step कौन से करिवे, तीन जणिया गोटे कमिटी को फॉर्मेशन करिवे जी कि तांकर तांको ऊपर जो चार्जेस लगा हेछि ताको से इन्वेस्टिगेट करिवो। ओके, से कमिटी रे की रहबे, the committee should consist one chief justice of or a judge of the Supreme Court. Okay, either chief justice or judge of Supreme Court, then chief justice of High Court. Okay, chief justice of High Court and distinguished jurist. Okay, just a second. Okay, chief justice or a judge of Supreme Court, chief justice of High Court and a distinguished jurist. ठीक अछि, तीन जन को नेकी गोटे कमिटी हबो। देन if the committee finds the judge to be guilty of misbehavior or suffering from an incapacity, okay, these are the conditions. Okay, a condition re tame gote Supreme Court judge को impeach kari paribo. Okay, so if the committee finds the judge to be guilty of misbehavior or suffering from incapacity, the house can take up the consideration of the motion. Okay, jodi committee paila tanku doshi either from guilty of misbehavior or suffering from an incapacity, then कौन हबो, से कमिटी से मोशन को कंसीडर करिवो। ओके, देन आफ्टर द मोशन इज पास्ड बाय ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट बाय स्पेशल मेजॉरिटी। ओके, स्पेशल मेजॉरिटी मींस एट इज स्पेशल मेजॉरिटी कौन, 2/3 ऑफ द मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग एंड मेजॉरिटी ऑफ द टोटल मेंबर ऑफ द हाउस। ओके, तो से स्पेशल मेजॉरिटी रे बिल पास हबो एंड एड्रेस इज प्रेजेंटेड टू द प्रेसिडेंट फॉर रिमूवल ऑफ द जज। ओके, से हाउस रे पास हबो, देन एट नेक्स्ट हाउस को जीवो। ओके, देन सेटा प्रेसिडेंट को दिया हबो टू रिमूव द जज। फाइनली द प्रेसिडेंट पास एन ऑर्डर रिमूविंग द जज। ओके, सो दिस इज द टू कंप्लीट इम्पीचमेंट प्रोसीजर ऑफ ए जज। एटी प्रेसिडेंट कर कोन थाए, एटी गोटे अलगा स्पेशल मेजॉरिटी थिला प्रेसिडेंट कर इम्पीचमेंट पय। ओके, 2/3 मेजॉरिटी रे तांको पास हेबार अछि बिल। एटी कोन होबे, 2/3 मेजॉरिटी नै, एटी टोटल मेजॉरिटी बट 2/3 ऑफ द मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग। ओके, बुझिलो इम्पीचमेंट तांगर प्रोसीजर कोन, पॉइंट बाय पॉइंट। फर्स्ट ऑफ ऑल लोकसभा रे 100 मेंबर, राज्यसभा रे 50 मेंबर से मोशन को आनियार अछि। ओके, सी आइदर स्पीकर या चेयरमैन को देबे। नेक्स्ट इज स्पीकर या चेयरमैन तक एडमिट भी करि परिबे, रिफ्यूज भी करि परिबे। जदि एडमिट हैला, स्पीकर चेयरमैन गोटे कोन करिवे, 3-member कमिटी बनेबे ताको इन्वेस्टिगेट करिया पय। ओके,
जदि से कमिटी रे किए किए रहिबो चीफ जस्टिस और ए जज ऑफ ए सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस और ए जज ऑफ ए हाई कोर्ट एंड गोटे डिस्टिंग्विश जूरिस्ट जदि से माने ताको दोषी पाइले ओके आइदर गिल्टी ऑफ मिसबिहेवियर और सफरिंग फ्रॉम एन इनकैपेसिटी देन हाउस कौन करिवो से मोशन को कंसीडर करिवो टेकअप करिवो देन ताको स्पेशल मेजोरिटी रे से हाउस पास करिवो देन इट विल गो टू द नेक्स्ट हाउस ओके they also will pass with special majority then it will go to the president then president will pass an order which will have the final that removal of the judge correct तो एटा भी मन रख it is interesting to know that no judge of the supreme court has been impeached so far ओके आज पर्यंत को भी जज को इम्पिच करा है सुप्रीम कोर्ट रे जेमती कि आज पर्यंत कि प्रेसिडेंट भी इम्पिच होना गोटे पॉइंट थिला सो दिस ऑल्सो रिमेंबर कि नो जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट हैज बीन इम्पिच्ड सो फार जनक ना इम्पिचमेंट मोशन आसला वी रामस्वामी ओके बट इट वाज नॉट पास्ड इन द लोकसभा एक्टिंग जज एटा एते इंपोर्टेंट नहीं ओके एक्टिंग जज एडहॉक जज रिटायर्ड जज किए हे परिबो कोन जस्ट सिंपली लिखा हिची का को एक्टिंग जज का को एडहॉक जज अपॉइंट कराई परिबो ओके दिस यू जस्ट तमे निजे पढ़ी दियो देन सीट कोड हे परिबो सुप्रीम कोर्ट रो कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्स दिल्ली एज द सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट but it is also authorized to the chief justice of india he can decide this also you remember UPSC रे थरे क्वेश्चन आस्थिला एडा ओके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया to appoint other places or places as seat of supreme court he can take decision in this regard only with the approval of the president okay president रा approval रे CJI can decide chief justice of india can decide कि supreme court रो seat आउ कोडे भी हेई पारिबो okay but right now according to constitution delhi is the seat of the supreme court एटा इंपोर्टेंट नहीं प्रोसीजर ऑफ द कोर्ट एटा तुम पढ़ी दबो कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस पाई ओके 5 जज बेंच हुए जदि किसी केस जोड़ा कि कॉन्स्टिट्यूशन ऊपर डिस्कस हुए ओके तो 143 आर्टिकल अनुसार द बेंच consisting of 5 judges will always decide constitutional cases okay minimum 5 जणिया बेंच दरकार बाकी केस ते 3 जण जणे एम सब करन then independence of the supreme court एडा गोटे मन रखिबो एटी केतरा पॉइंट अछि व्हाट आर द इंडिपेंडेंस केमिति मेंटेन हुए सुप्रीम कोर्ट रो ओके सुप्रीम कोर्ट होची फेडरल कोर्ट द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील एंड दिस स्टेटमेंट इज वेरी वेरी इंपोर्टेंट बहुत थर एग्जाम रे आसी सुप्रीम कोर्ट इज द गारंटर ऑफ फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन्स and the guardian of the constitution okay it's not president but it's supreme court who is the guarantor of the fundamental rights of the citizens and guarantor of the constitution therefore its independence becomes very essential for the effective discharge of its duties okay जेहेतु ये guardian fundamental rights रो आउ guarantor fundamental rights रो guardian constitution रो तो यार independence maintain करिया it's very very essential okay तो केमिति maintain हुए point by point we'll see okay what are the provisions which maintains the independence of supreme court one is mode of appointment okay the judges of the supreme court are appointed by the president which means the cabinet in consultation with the members of the judiciary itself okay तो जज मानकर जो अपॉइंटमेंट हुए प्रेसिडेंट करंती बट फास्ट कंसल्टेशन माने किए दिए तांको ना सब सुप्रीम कोर्ट ही दिए जुडिशियरी ही दिए ओके दिस कॉलेजियम सिस्टम ही दिए तो कौन है सी जेहेतु सिलेक्शन प्रोसेस रे किसी एग्जीक्यूटिव रो इंटरफेरेंस रहिलानी जुडिशियरी इटसेल्फ इज अपॉइंटिंग द जजेस टू द सुप्रीम कोर्ट दैट्स व्हाई देयर इंडिपेंडेंस इज मेंटेन्ड ओके जदि एटे एग्जीक्यूटिव किबा लेजिस्लेचर इंटरफेयर करूथांते देन इंडिपेंडेंस ऊपर तांकर आस्थांता ओके चैलेंज so this is one second security of tenure okay they can be removed from the office by president only in the manner and on the grounds mentioned in the constitution okay constitution रे जो ground mention हेछि जो manner impeachment procedure mention हेछि केवल से उपाय रे ही तमे जज को रिमूव करि परिबो no other way and only by president this ensure the security of tenure then fixed service condition they cannot be changed to their माने तांके जॉइन हला बेले जहा तांको सैलरी अलाउंसेस अछि ताकू तमे छेड़खानी सेतिर करि परिबो नाही ओके एक्सपेंसेस चार्ज्ड ऑन कंसोलिडेटेड फंड व्हाट आर द एक्सपेंसेस ओके जहा भी खर्च हुए सेडा कोन हुए पार्लियामेंट रे इट इज चार्ज्ड ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया एंड इट्स नॉट वोटेबल पार्लियामेंट कैन नॉट वोट ऑन दिस ओके तांकर खर्च पई सैलरी बढ़ाया पई जहा भी हुए ना सेथिरे किछि वोट हुएनी ओके तो भोट हेले कौन हम किए तार सपोर्ट रे किए तार एग्नेस्ट दबो सेमति तेनु वोट हुएनी टू मेंटेन द इंडिपेंडेंस ऑफ
the judiciary. Then fifth, conduct of judges cannot be discussed. ओके को भी जज रो कंडक्ट ओके सी एमडी कला सेमडी कला कहि तुमे पार्लियामेंट या तो स्टेट लेजिस्लेचर रे को भी जज रो कंडक्ट को डिस्कस करि परिबो नाही टू मेंटेन द इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशियरी. ओके बैन ऑन प्रैक्टिस आफ्टर रिटायरमेंट इट इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी. ओके सी कोनसी प्रैक्टिस प्राइवेट प्रैक्टिस या गवर्नमेंट रे प्रैक्टिस करि परिबे नाही वंस दे रिटायर्ड फ्रॉम द जज. ओके फ्रॉम द पोजीशन ऑफ जज. पावर टू पनिश फॉर इट्स कंटेम्प्ट. कंटेम्प्ट मीन्स हम जानि छ कि डेरोगेटरी जदि किए किसी रिमार्क देला ओके किए डिसरेस्पेक्टफुल किसी काम कला देन सुप्रीम कोर्ट हैज द पावर टू पनिश दैट पर्सन इटसेल्फ. ताको आउ की पनिशमेंट दबनी से निजे ही तांकर निजर दोषी को पनिशमेंट देबे. ओके इट्स नॉट लाइक कि इफ somebody will tell something disrespectful to the supreme court parliament will punish. No, supreme court itself will punish. Okay ताको होचंदी contempt of court case. Okay so निजे ही निजर दोषी को दंड दउचंदी so they are independent. Then freedom to appoint its staff, they are free to appoint their own staff. Its jurisdiction cannot be curtailed. Okay तांकर जो jurisdiction अछि जो जेतकी एरिया पन तो सेमान तांकर जजमेंट दे परिबे ताकू केही भी कमे परिबे नाही. ओनली पार्लियामेंट कैन एक्सटेंड. ओके जो एरिया रे तांको पावर दिया हिची टू व्हाट फ्री एंड फेयरली तांके जस्टिस प्रोवाइड करिया पई ताकू तमे कमे परिबो नाही केही भी कमे परिबे नाही. पार्लियामेंट ओनली कैन एक्सटेंड द सेम. ओके जदि को एरिया रे तांकर पावर नाही पार्लियामेंट तांको एक्स्ट्रा देई परिबो. फॉर एग्जांपल रिट पिटिशन गोट अछि. ओके से रिट पिटिशन ओनली फंडामेंटल राइट रो रिट पई सुप्रीम कोर्ट पाखरे पावर अछि. ओके अदर रिट पई हाई कोर्ट रे पावर अछि. बट सुप्रीम पार्लियामेंट चाहिए अदर रिट पिटिशन रो डिसीजन भी सुप्रीम कोर्ट को देई परिबो. So it is one of the extension of power to the Supreme Court by Parliament. Okay, but केही भी तांकर jurisdiction को कमी परिबे नाही. Next, separation from executive. Okay, executive will not interfere in the judicial process of Supreme Court or the judiciary. Okay, executive माने कोनसी judicial power नहीं परिबे नाही. Okay. So all these are to maintain the independence of judiciary. Okay. आठ 10टा पॉइंट थिला ताकू मन रखियो तार भितरटा माने एक्सप्लेनेशन टा तुमको दरकार नहीं जस्ट पॉइंट टा मन रखो तार मीनिंग टा बुझो दैट्स इट. ओके एडा भी सेडा भी इंपोर्टेंट. देन जुरिस्डिक्शन केतरा जुरिस्डिक्शन अछि कोन अछि देखिबा. जुरिस्डिक्शन एंड पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट. ओके सुप्रीम कोर्ट इज द फाइनल कोर्ट ऑफ अपील. ता ऊपर किछि नाही. So they are the final court of appeal. Okay, they are the final interpreter and guardian of the constitution. Okay, and guarantor of the fundamental rights of the citizens. हमें पढ़ ले. It has advisory and supervisory power also. से president को advise करंती जो केस रे president तंग advice मागिवे से तंग advice करंती. Okay, तो कौन सुप्रीम कोर्ट jurisdiction और power. Okay, they have so many jurisdictions. Okay, कौन कौन तार just meaning देखि देबा. गोटे एग्जांपल नेकी ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन रिट अपीलेट एडवाइजरी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन एंड अदर पावर्स. ओके सो वन बाय वन विल सी व्हाट इज ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन. फर्स्ट ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन माने कोन जस्ट मु तुमको मीनिंग कहूची कि नॉट बाय द वे ऑफ अपील. ओके दे you can go to them without any appeal. Okay and they are exclusively they have the jurisdiction to decide the case. Okay for example and no other court has that power to decide that case. For example तीन प्रकार एटा अछि between the को case रे a federal court supreme court decides the disputes between different units of the Indian federation. कौन कौन सेटा between center and states जदि किछि गोटे केस हैला सेंटर और स्टेट भितरे. Otherwise center and any state one side आउ बाकी स्टेट अदर साइड. आउ गोटे केस कोन बिटवीन टू और मोर स्टेट्स जदि आंको भितर किसी झगड़ा हला डिस्प्यूट हला दीटा स्टेट भितर हो सेंटर को स्टेट भितर हो या तो सेंटर दि तीनटा स्टेट आउ गोटे साइड रे आउ केतरा स्टेट ए सब केस रे डिसाइड करियार पावर केवल सुप्रीम कोर्ट पाखरे अछि. आउ यू कैन हाई कोर्ट कैन नॉट डिसाइड. ओके दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन. ओके original that dispute will be decided by the Supreme Court. No other court can decide this kind of disputes. बुझिलो एडा कहउछन्दी ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन. ए तीनटा सेंटर एंड वन स्टेट गोटे पटे सेंटर आ गोटे पटे वन और मोर स्टेट
गोटे पटे सेंटर सहित किसी स्टेट आउ अलग पटे अलग स्टेट्स या तो बिटवीन टू स्टेट्स ओके एटा हूँ ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन तो लिखा in the above federal dispute the supreme court is exclusive and original jurisdiction exclusive means man kono no other court can decide such disputes original means the power to hear such disputes in the first instances not by way of appeal man एमती नाही जे फास्ट तुम हाई कोर्ट गलो हाई कोर्ट रू तुमको satisfaction मिलला नहीं तुम गलो सुप्रीम कोर्ट नो इट्स नॉट बाय द वे ऑफ अपील डायरेक्टली तुम जीव सुप्रीम कोर्ट जदि दीटा स्टेट भितर किसी डिस्प्यूट है डायरेक्टली से जीवे सुप्रीम कोर्ट okay but ସେଇଥିରେ ବି କିଛି exception ଅଛି okay there are certain cases where the original jurisdiction is not applicable okay देखो ଏଠି ଦେଇଛି ଏଟା ପଢିବ for example ମୁଁ ଗୋଟେ ତମକୁ କହୁଛି inter state water dispute okay this is not original jurisdiction ଧର ଏବେ ओडिशा छत्तीसगढ़ भिତରେ ଆମର dispute ଅଛି ମହାନଦୀକୁ ନେଇକି this is you cannot call it as original jurisdiction माने सुप्रीम कोर्ट नहीं जे दीटा स्टेट डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट को जिबे आउ कि हम डिसाइड करि परिबनी ओके तो एभला 10टा एक्सेप्शन को छाडिले बाकी सब केस रे सेंटर स्टेट भीतर जदि डिस्प्यूट हला ओके दे विल डायरेक्टली गो टू सुप्रीम कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट इज एक्सक्लूसिवली एलिजिबल टू डिसाइड दोज केसेस ओके आउ कोन हेतिया दरकार दि तीनटा कंडीशन कोन अछि कि जो केस तमे नै कि जीवो से केस किछि ना किछि ओटे लॉ या तो फैक्ट को रिप्रेजेंट करथुवार अछि किछि ना किछि ओटे कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर थिवार अछि सेइतरे ओके आउ के जे कोनसी प्राइवेट पर्सन जाय कि सेंटर या तो स्टेट अगेंस्ट रे सेवला केस सुप्रीम कोर्ट रे कर परिबोनी दीटा स्टेट इन्वॉल्व हेथियार अछि या तो सेंटर और स्टेट इन्वॉल्व हेथियार अछि आ से जो मैटरटा सेटा किछि ओटे कॉन्स्टिट्यूशनल या तो लॉ रिलेटेड मैटर हेथियार अछि राइट तो एटा होछि ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन बुझिलो कार डाउट अछि व्हाट इज ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन सुप्रीम कोर्ट रो बुझिलो माने केस रो ओरिजिनल जो केस डायरेक्टली तुम सुप्रीम कोर्ट जाउछ नॉट वे ऑफ अपील ओके डायरेक्टली माने तुम हाई कोर्ट की जाइनो कि कोर्ट की जाइनो डायरेक्ट तुम केस नहीं कि सुप्रीम कोर्ट पाखु गलो सेटा किछि गोटे कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर या किछि गोटे लॉ सहित इन्वॉल्व अछि सुप्रीम कोर्ट तापर जजमेंट दबो ओके दिस इज कॉल्ड एज ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन रीट रीट रो मीनिंग सिंपली होछि कमांड ओके माने सुप्रीम कोर्ट कमांड करिवो तुमको फॉर एग्जांपल मोर किछि गोटे फंडामेंटल राइट वायलेट हला मु सुप्रीम कोर्ट पाखु गली तो सुप्रीम कोर्ट कमांड करिवो द अथॉरिटी को कि एंश्योर करा अरे ए जिंसटा कोन में वायलेट हला ता कोछन रिट जुरिस्डिक्शन ओके देयर आर सम हम पढिथिले फंडामेंटल राइट चैप्टर रे सर्टेन रिट्स ओके हेबियस कॉर्पस मैंडामस ओके प्रोहिबिशन क्यू वारंटो सर्शियरी एटा पढिथिले मनथिबो हेबियस कॉर्पस माने इलीगल डिटेंशन जदि तुम कागु इलीगली डिटेन कर दिछो okay then supreme court will ask the authority ki why you have illegally detained this person okay why you have encroached in his areas of fundamental rights okay तो ए केस ओडा रे इन केस ऑफ फंडामेंटल राइट्स सुप्रीम कोर्ट रे एक्सक्लूसिवली राइट्स अछि रिट जुरिस्डिक्शन पाई ओके फॉर एग्जांपल माने तार अर्थ होछि कोन मोर जदी फंडामेंटल राइट वायलेट हैला आई कैन गो डायरेक्टली टू सुप्रीम कोर्ट विदाउट गोइंग टू एनी सबऑर्डिनेट कोर्ट और हाई कोर्ट I can directly go to Supreme Court and file an writ petition. कि मोर ए fundamental right violate ହେଇଛି, you direct the authority. Right? It has simply a meaning. Supreme Court has देखो लिखा है original jurisdiction. Okay, in case of writ petition. Okay, which is related to fundamental rights. Okay. However, the writ jurisdiction of the Supreme Court is not exclusive. Okay, माने कौन? The higher courts are also the high courts are also empowered to issue writs for the enforcement of the fundamental rights माने हम कोन कहली बुझलो मोर जदी fundamental right violate हला I can directly go to Supreme Court and file a writ petition but I can also go to high courts and file a writ petition okay माने एटा high court रो jurisdiction रे अछि Supreme Court रो jurisdiction रे भी अछि but Supreme Court रो original jurisdiction एथि पे कहउछि जे मु हाई कोर्ट न जाय कि भी डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जाय परिबी ओके कारण बहुत सारा केस अछि तमे डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जाय परिबोनी हमको तळ कोर्ट टू स्टार्ट करबा पड़िबो बट इन केस ऑफ रिट पिटिशन विथ रिस्पेक्ट टू फंडामेंटल राइट्स तमे डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट को जाय परिबो बुझि परलो हां आउट कोन डिफरेंस देयर इज आल्सो अ डिफरेंस बिटवीन द रिट जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट ओके कोन एडा भी बुझो एडा भी इंपोर्टेंट the supreme court can issue writ
only for the enforcement of the fundamental rights and not for other purposes. Okay, but the high court on the other hand can issue writs not only for the enforcement of the fundamental rights but also for the other purposes. Okay, तो फंडामेंटल राइट जो तुम भायोलेट होची तुम डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जाई परिबो, हाई कोर्ट भी जाई परिबो, बट हाई सुप्रीम कोर्ट फंडामेंटल राइट छडा कौन सी जिनस तुम भायोलेसन रे तुम पिटिशन नहीं सुप्रीम कोर्ट जाई परिबोनी. But apart from fundamental right also, if certain rights are violated, then the person can go to high court. Okay, so high court ro writ jurisdiction is broader than supreme court. बुझिपारल, because supreme court ro writ jurisdiction is only limited to fundamental rights. Then appellate jurisdiction did am पढ़ले, original jurisdiction, writ jurisdiction, third is appellate jurisdiction. Appellate jurisdiction माने simple meaning होची way of appeal. माने हाई कोर्ट रे तुम कोर्ट केस रो फाइनल जजमेंट आसिला, तुम सैटिस्फाइड हेलोनी, तुम सुप्रीम कोर्ट को गला, सेटा कहउछन appellate jurisdiction, way of appeal, not directly you are going to supreme court, you are appealing the decision of the lower court. ओके, तुम गोटे कोर्ट केस कल, फास्ट सबऑर्डिनेट कोर्ट टू स्टार्ट कल, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, तापर गल हाई कोर्ट, तापर गल सुप्रीम कोर्ट, लोक जाउछन्ती सैटिस्फाई न होला अपन जिबे आका, बुझल, सेडा कहउछन एपिलेट जुरिस्डिक्शन. इथरे कोन कोन अछि, अपील इन कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर रे तुम जाई परिबो, अपील इन सिविल मैटर रे जाई परिबो, अपील इन क्रिमिनल मैटर रे जाई परिबो, स्पेशल पिटिशन गोटे अछि माने जोटा कि को केस को माने कोन जुरिस्डिक्शन रे जाउनी गोटे स्पेशल केस, ताकू तुम स्पेशली पिटिशन थ्रू रे भी सुप्रीम कोर्ट जाई परिबो. ओके, तो ये हूँ अपीलेट जुरिस्डिक्शन. इथिरे बेसी किसी ना, जस्ट पढ़ीदेव कन्स्टिट्यूशनल मैटर कौन, सिविल केस रे कौन कौन अच्छी, क्रिमिनल केस रे कौन कौन अच्छी, सिंपली एतिकी बुझ अपीलेट जुरिस्डिक्शन माने वे ऑफ अपील. ओके, देन फोर्थ होची एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन. एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन आम पढ़ी प्रेसिडेंट चैप्टर कि पढ़ी कि प्रेसिडेंट जदि चाहिए, इफ ही सीक्स एनी एडवाइस फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट, then supreme court has to provide that advice. Okay, ताको उसने advisory jurisdiction, क्या से advice करिवे, president. Okay, on the question कौन इथिर दीटा अच्छी difference कौन on any question of law or fact of public importance which is arisen or which is likely to arise. Okay, ए related जदि president किसी चाहूचुने advice supreme court देबे. Second होची on any dispute arising out of any pre-constitution treaty agreement, okay, and engagement, all these things. ए विषय में जदि प्रेसिडेंट किसी एडवाइस चाहूचंदी, देन सुप्रीम कोर्ट दबाकू पड़िबो एडवाइस. ओके, एठी भी अछि कि हां आउट जिंस कोन, ए जो एडवाइस सुप्रीम कोर्ट देबे प्रेसिडेंट को, इट इज नॉट बाइंडिंग. ओके, प्रेसिडेंट चाहिले से एडवाइस को नहीं परिबे, न चाहिले नहीं न परिबे. द एडवाइस इज नॉट बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट. देन ए कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड. कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड माने सिंपली मीनिंग बुझो, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड माने जो माने गोटे केस चलची है, सुप्रीम कोर्ट से रेफर करुच्ची जे आमर जो 90s रे जो जजमेंट आसीथिला ए रिलेटेड, आमे से जजमेंट रे जिनसटा कहिथिलु, नहले वकील मान देखिबो बेले बेले आर्गुमेंट रे कहंती तांगे रेफर करिवो गोटे केस रो जजमेंट को. ओके, कि ए बेंच रो ए जजमेंट रे आपण या कहिथिले, से बेसिस रे सेमाने आर्गुमेंट करंती, सेडा कहंती कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड. माने कोर्ट रो रिकॉर्ड, कोर्ट जो केस रे जहा जहा फैसला जणाउची सेटा रेकॉर्ड हेकी रहउची, and that can be also used as an evidence. Okay, that can be also used during argument ki in this case the court has decided like this. Okay, advocate man argue karanti na ki Kerala high court ro ei decision सुनाइथिला ए मसिया रे ए केस उपरे. ओके, तो ताकू सेडा भी गोटे काइंड ऑफ एविडेंस. ओके, ताकू भी एडवोकेट माने या तो कोर्ट इटसेल्फ आल्सो यूज करि परिबो तांगर फर्दर फ्यूचर जजमेंट मानक पई. ओके, सेडा कहउछन्ती कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड. बुझिलो, लीगल रेफरेंस यूज करि परिबो कोर्ट एंड लीगल प्रेसिडेंट्स टाइप यूज करि परिबो. ओके, माने निजर ही जजमेंट को निजे ही यूज करा जाय फ्यूचर रेफरेंस पई, या तो निजर ही जजमेंट को जो एडवोकेट माने रेफर करंती तांगर केस लढिला सेडा कहउछन्ती कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड. ओके, पावर टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एडम बुझेली. ओके, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट माने तमे जदि कोर्ट को डिसरेस्पेक्टफुल करी किछि कहिलो, ओके, को जज रो ऑर्डर माने फाइनल ऑर्डर को किछि माने डिसरेस्पेक्टफुल कलो या तो किछि कलो, देन कोर्ट हैज द पावर टू पनिश यू. ओके, ताको कहउछन्ती कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट. एथिर दीटा अछि, गोटे होछि सिविल आ गोटे क्रिमिनल. सिविल माने कोन, जदि तमे कोर्ट रो ऑर्डर को मानिलनी, कोर्ट किछि गोटे ऑर्डर देला फाइनल ऑर्डर, तमे ताको मानिलनी,
देन सुप्रीम कोर्ट कौन करिपारिबो सी तुम ऊपर सिविल कंटेम्प्ट लगे पारिबो कि तुम मानिलनी विल टेक एक्शन ओके से फाइन हो पारे जेल हो पारे किसी हो पारे आउट हूँ क्रिमिनल कंटेंट क्रिमिनल कंटेंट माने कौन तुम कोर्टर कौन जज को माने किसी गोटे डेरोगेटरी लैंग्वेज रे पब्लिक रे किसी कहल या तो कोड आर्टिकल छापिल ना रे ओके माने बेसी ही हार्ड एक्शन ना माने किसी गोटे अगेंस्ट तुम एक्शन नहीं गल ओके से केस रे तुम कौन देख स्कैंडलाइजेस or lowers the authority of court okay or prejudices or interferes with the due course of judicial proceeding माने गोटे judicial proceeding चलची से मझरे तुम किछु गोटे disrespectful कथा कहल ओके से केस रे सेमान तुम ऊपर एक्शन नहीं परिबे क्रिमिनल एक्शन ओके आ जदि सिंपली तुम तांकर ऑर्डर को मानलनी देन सिविल कंटेम्प्ट ओके सिविल कंटेम्प्ट रे पनिशमेंट के कम क्रिमिनल रे पनिशमेंट के अधिक then power of judicial review तो जानिଛ हला to examine the constitutionality of legislative enactment or executive order of both central and state government माने जहाँ भी सेंट्रल गवर्नमेंट या तो स्टेट गवर्नमेंट र किसी ऑर्डर हला किसी लॉ हला किसी एक्ट हला ताकू रिव्यू करियार पावर सुप्रीम कोर्ट पाखे अछि ओके जुडिशियल रिव्यू इज ए बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन ओके सुप्रीम कोर्ट पाखे पावर अछि कि एनी एक्ट एनी लॉ एनी ऑर्डर of either central government or state government can be reviewed by the Supreme Court if somebody has filed an appeal. Okay, or suo motu also. Suo motu माने निजे निजे भी करि परिबे. Okay. Then constitutional interpretation, Supreme Court is the ultimate interpreter of the Constitution. That is important. किए कि Constitution रो ultimate interpreter that is Supreme Court. Okay, not President. देन किसी डॉक्ट्रिन अच्छी एवडार मीनिंग टिके नेट रे बाहर करके देखिदबो दिस यू कैन यूज इन योर मेन्स आंसर राइटिंग मोस्टली एवडा प्रीलिम्स रे आसेनी ओके तथापि किसी देखि देथिबो व्हाट इज डॉक्ट्रिन ऑफ सिवरेबिलिटी व्हाट इज डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स ओके व्हाट इज डॉक्ट्रिन ऑफ पीथ एंड सब्सटेंस किसी तुम नेट रे आर मीनिंग बाहर करके देखिदबो अदर प्रोविजंस वगैरह इज नॉट इंपोर्टेंट ओके सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स वगैरह इज नॉट इंपोर्टेंट ओके ये टेबल टा टिके देखिदबो ओके इंडियन सुप्रीम कोर्ट और अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट भितर कौन फरक अच्छी दिस इज ऑल्सो इंपोर्टेंट जहाँ मुझे तुमको पढ़ेली से रिलेटेड ही अच्छी एथरे किसी नुआ ना है कौन टा आमर ये अच्छी कौन टा सीटी ना या तो कौन टा अच्छी कौन टा आमर ये ना समथिंग लाइक दैट है फॉर एग्जांपल तुम कही दूसरी आमर ये इंडिया रे कौन अच्छी एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन अच्छी कि सुप्रीम कोर्ट आमर प्रेसिडेंट को एडवाइस दे पारिबे अमेरिका रे सेमती किसी ना इट हैज नो एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन ओके आमर स्कोप ऑफ जुडिशियल रिव्यू इज लिमिटेड तांकर स्कोप ऑफ जुडिशियल रिव्यू इज वाइड बिकॉज दे फॉलो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ वी फॉलो प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ ओके एमदी किसी डिफरेंस अच्छी देखिदबो द जुरिस्डिक्शन एंड पावर कैन बी एनलार्ज्ड बाय पार्लियामेंट रा हमर पावर अछि सुप्रीम कोर्ट रो जुरिस्डिक्शन ऑफ पावर को समान बढ़ाई परिबे इट्स जुरिस्डिक्शंस एंड पावर्स आर लिमिटेड टू that conferred by the constitution एठी अमेरिकन कांग्रेस cannot increase the jurisdiction and power of American Supreme Court okay बस that's it बस एठी किछरा इंपोर्टेंट देखियो तुमको इंपोर्टेंट आर्टिकल केटा मन रखियो फॉर एग्जांपल मु तुम कहि दउ जे एठी ओके ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन होची आर्टिकल 131 ओके स्पेशल लीव पिटिशन 136 रेट okay 139 power of president to consult supreme court 143 okay बस ये 4-5 टाइम मन रखिबो हला दैट्स इट चैप्टर सरला आम देखा किसी कार डाउट अच्छी कि पचार और एल्स किसी क्वेश्चन मु आज तो करनी प्रेसिडेंट माने सुप्रीम कोर्ट पे नहीं बट
এই ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ପାଇଁ କିଛିଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିଥିଲି, କାଲି କରି ହେଲାନି, ଏବେ କରିଦେବା ଆମେ। କାହାର କିଛି ଡାଉଟ୍ ଅଛି କି ଫାଷ୍ଟ ପଚାର। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଚାପ୍ଟରରେ କାହାର କିଛି ଡାଉଟ୍ ଅଛି? ତମେ ଆଉ ଥରେ ପଢ। ଏବେ ମୁଁ ତମକୁ ଦେଖ ଏମିତି ହବା ଦରକାର ଯେ ତମେ ଥରେ ପଢିଛ, ମୁଁ ତମର ଥରେ ରିଭାଇଜ କଲି, ଏଗେନ୍ ୟୁ ରିଭାଇଜ ୱାନ୍ସ। ଓକେ, ତାହେଲେ କ'ଣ ହବ କି ତମର କନସେପ୍ଟ ନା ପୁରା ମାନେ ଭଲସେ ମନେ ରହିଯିବ, କିଛି କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ଆସିବନି। ଦେନ୍ ଯୋଉଠି ତମେ ଯେତେବେଳେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଟେଷ୍ଟ ଦଉଛ, ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରୁଛ, ଏଗେନ୍ ୟୁ ରେଫର। ଓକେ, କ'ଣ ମୁଁ କହିଥିଲି, କ'ଣ ତମେ ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ କରିଛ, ତାକୁ ରେଫର କର। ମୋଷ୍ଟଲି ଯେତିକି ଜିନିଷ ମୁଁ ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ କରିଛି ନା, 99% କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସେଇଥିରୁ ହିଁ ଆସିବ, ତା ବାହାରେ ଆସିବନି। କାରଣ ମୁଁ ବି ଏତେ ଥର ପଢିଛି, ଏତେଟା ଏକ୍ଜାମ ଦେଇଛି, ତା ବାହାରୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପ୍ରାୟ ଆସେନି। ଓକେ ଓକେ, ଯଦି କିଛି ଡାଉଟ୍ ନାହିଁ ୱିଲ୍ 5-6ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି, ଆମେ ଦେଖିଦେବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଲା। ଦେଖ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, which of the, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମେ ଯୋଉ ପଢିଥିଲେ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଆଉ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଚାପ୍ଟରର, ଠିକ ଅଛି। 1 minute ଟାଇମ୍ ଦିଆହେଲା, ଷ୍ଟାର୍ଟ। which of the following are the discretionary power given to the governor? आंसर करो, माने मेसेज करो। sending a report, okay, which are the following are the discretionary powers given to governor of a state. Okay, discretionary power. Sending a report to the president of India for imposing president's rule. Okay, appointing the ministers, reserving certain bills passed by the state legislature for the consideration of the president, making the rules to conduct the business of the state government. आज ही पढ़ ले, गवर्नर चैप्टर में आज ही पढ़ चुके। अलमोस्ट ऑल समस्त ठीक आंसर देइछ। कारण देख तुम ये केमती कर जदि तुमको जना नहीं, जदि जान ठीक अच्छे, सेंडिंग ए रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर इम्पोजिंग प्रेसिडेंट रूल, एटा तो करेक्ट जानिछ है। अपॉइंटिंग द मिनिस्टर्स, एटा डिस्क्रिशनरी पावर ना, निज तुमको जना नहीं। ओके, एटा ठीक कंफ्यूजन अच्छी, 1 इज करेक्ट, तो एटा ऑप्शन तुमर गला है। Then reserving certain bills passed by the state legislature for consideration of the president of India. जदि एटा भी तुमको डाउट अच्छी तुम रख। मेकिंग द रूल्स टू कंडक्ट द बिजनेस ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, एटा कोठी भी डिस्क्रिशनरी पावर नथिला है ना नहीं, तो याकू तुम काटिबो। तो ये 4 गला, माने ए ऑप्शन भी गला, रहिला 1 and 2, 1 and 3। यू नो 1 इज करेक्ट। ए दुटा भितर तुम जदि कंफ्यूजन होची, अपॉइंटिंग द मिनिस्टर्स and reserving certain bills passed by the state legislature for consideration of the president of India. ओके, तो ए ऑप्शन भी आमे कोडी पढी नांती। देखो, रिमूवल, डिसॉल्व, ओके, ए जिंसोडा थिला तांगर डिस्क्रिशनरी पावर रे। जदि तमरो नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हे गला, ओके, जदि तमे मेजॉरिटी प्रूफ करि पारना, इन दैट केस व्हाट, governor can dissolve the state legislative assembly. Okay, but in case of appointing the minister, this is discretionary power, he is bound to appoint the ministers as given by chief minister. Chief minister कौन करिवे, तांको proposal देबे, ना देबे minister मानकर, and he is bound to appoint, he has no discretionary power. Okay, as recommended by the chief minister, governor is bound to appoint the ministers. Okay, so this is also wrong, so answer will be 1 and 3. Okay, एटा भी हम पढ़ी, सी किछिटा बिल रिजर्व करि परिबे, ओके, फॉर द कंसिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। दिस इज द कॉन्स्टिट्यूशनल discretionary power. This power is not for president, this is only for governor. Okay, एटा भी हम पढ़ी कि there are certain constitutional discretionary power for the governor which is not for the president. Okay, so answer is C, B. You, I think almost all are correct. Then question number 2. Consider the following statement. The president shall make rule for the more convenient transaction of the business of the government of India. Okay, president shall make rules for more convenient transaction of business of government of India, and for the allocation among ministers of the said business. Second, all executive actions of the government of India shall be expressed
okay, to be taken in the name of Prime Minister. Which of the statement are correct? 1 minute time. Okay. तो किसी जन आंसर करिछ ए, किसी जन आंसर करिछ डी. ओके, ए और डी. गोटे मिनिट रुह. देखो ऑप्शन सी, जो सी अच्छी. President can make rules for more convenient transaction of business of union government and for allocation of the said business among the ministers. Okay, this is one of the executive functions of president. Okay, तो तमे केमिति कहूछ आंसर डी हबो बोली, माने नहीं. जो माने भी डी कहछ, आई एम जस्ट टेलिंग यू कि दिस इज वन ऑफ द एग्जीक्यूटिव फंक्शन ऑफ president. Okay, so this option is correct. The president shall make rule for more convenient transaction of business of the government of India and for the allocation among minister of the said business. काली हम पढ़ी छंदी. Okay, हाँ, yes, आर्टिकल जे भी मेंशन करछ ठीक अछि. एटा होछि करेक्ट. Okay, तो one is definitely correct, neither one nor two is first of all wrong. Okay, second, all executive actions of the government of India shall be expressed to be taken in the name of president, right? So option 2 is wrong. So both is 1 and 2 is also wrong. This option is also wrong. So answer will be, जो मैंने भी D कहथिलो, correct yourself, है ना. This is how everything confusion आसे पढ़िला ପରେ भी, सेति में बार बार repeated revision दरकार, है ना. Question number 3. Which of the following are not necessarily the consequences of the proclamation of the president rule in the state? Okay, जदि president rule proclaim hela state रे कोटा necessary नुह, necessary consequences नुह. Okay, which are not necessarily the consequences. One, dissolution of the state legislative assembly, is it necessary or not? Okay, dissolution. Removal of the council of minister, whether it is necessary or not. Dissolution of the local bodies, whether it is necessary or not. Okay, select the correct answer. बाकी मैंने आंसर करो. ओके, देखो एई ऑप्शन टाको बहुत पिला जानि पारुनो, सेति पे मे भी आंसर करूनो कि डिसोल्यूशन ऑफ द लोकल बॉडीज. ओके, एटा तुमको जणा नै, ठीक अछि, हैला. बट दिस क्वेश्चन इज वेरी इजी. एट जदि तुम गोटे आंसर जानिछ ना, इट्स वेरी इजी टू एलिमिनेट. देखो, डिसोल्यूशन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, एटा मु तुमको काली बारंबार कहिथिली.
If there is a president rule in a state, the assembly will not dissolve. Okay, the assembly will not dissolve, the assembly will not suspend also. Only the council of ministers will be dismissed. କାଲି ଆମେ ବାର ବାର ପଢିଥିଲେ ନା ପରଦିନ ପଢିଥିଲେ emergency chapter ରେ କି if there is a president rule in a state, only the council of minister will dismiss. Okay, if the governor wants, then he can suspend or dissolve, but automatically the legislative assembly will not dissolve. But once the president rule is proclaimed, automatically the council of ministers will dismiss. Okay, the statement 2 is correct. Removal of the council of ministers is nothing but the dismissal of the council of ministers. Okay, the statement 2 is correct. And dissolution of the state legislature, first statement itself is wrong. The state legislative assembly will not dissolve. तो तुम जदि जानिलो वन ही करेक्ट रॉन्ग अच्छी तो तीनटे एक ऑप्शन रॉन्ग हे गला जुड सेडी तमे जानिया दरकार नहीं जे टू सॉरी हमर एटा ठीक अछि ना सॉरी गोटे मिनिट ओके एटा आंसर कोन हबो क्वेश्चन नंबर 3 रो से कोन पचारछि करेक्ट आंसर कोनटा कॉन्सिक्वेंसेस नुह से पचारुछि हैला एटा होछि कॉन्सिक्वेंसेस सॉरी मु तुमको भूल कर दिली से पचारुछि कोनटा कॉन्सिक्वेंसेस नुह एटा होछि कॉन्सिक्वेंसेस ओके रिमूवल ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज वन ऑफ द कॉन्सिक्वेंस ऑटोमेटिक हबो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिमूव हबो ओके द 2 इज करेक्ट सी पचारुछि रॉन्ग कोडा 2 इज करेक्ट एटा देखो 2 अछि एटा भी ऑप्शन हबोनी एटा भी हबोनी एटा भी हबोनी सी पचारुछि नॉट okay which is not necessarily the consequences तमे जान लो 2 is a correct statement तो जोड़ जोड़ 2 अछि ना सेडा सेडा आंसर हबोनी सो आंसर विल बी बी 1 and 3 जदि भी तमेडा जानि न जे डिसोल्यूशन ऑफ लोकल बॉडी हबो कि ना हम पढिबि नांदी कि एडा को बहिरे देबि नै स्टिल यू कैन फाइंड द आंसर तमे जानिछो 2 हबोनी माने 2 कटला आ जदि भी कंफ्यूजन थांता ना 1 is also wrong you know तो एटा हबो आंसर रे ओके तो दिस वे यू हैव टू फाइंड द आंसर करेक्ट बुझिलो बे Next, question number 4. If the President of India exercises his power as provided under Article 356 of the Constitution in respect of particular state, okay, 356 kono President rule, okay, then the Assembly of the state is automatically dissolved. The power of the legislature of the state shall be exercisable by or under the authority of the Parliament. Article 19 is suspended in all that state. Okay, the president can make laws relating to the state. Okay, समस्त almost ठीक आंसर करिछो जण जण को छाडले ओके देखो द असेंबली ऑफ द स्टेट इज ऑटोमेटिकली डिसॉल्व्ड एटा भी पढले हबोनी ओके दिस स्टेटमेंट विल सी आर्टिकल 19 is suspended in that state एटा को केस रे हुए नेशनल इमरजेंसी not in president rule okay the president can make law relating to the state parliament can make law relating to the state okay it the meaning he say na power of legislature of the state shall be exercisable by the parliament तो confusion होची parliament law बनेबो ना president बनेबो okay तो आमे पढिथिले emergency chapter रे parliament will make law in the state list when there is a president rule parliament is entitled or parliament is authorized to make law for the state list also okay president कोठी बनांती okay all the authority of the state will go under the parliament okay so option B will be correct. Last question, consider the following statement: no criminal proceedings shall be instituted against the governor. Okay, it aji padhala. No criminal proceedings shall be instituted against the governor of a state in any court during his term of office. Okay, तुम जी पचार फ्लो डाउट
The emoluments and allowances of the governor of the state shall not be diminished during his term of office, which other statement is correct. ଏବେ ବି ମୁଁ ତମକୁ କହିଛି ଓକେ almost ସମସ୍ତେ ଠିକ୍ ଆନ୍ସର କରୁଛ ଓକେ ଏଇଟା ତ ଏବେ ବି କହିଛି ସୋ ୟେସ୍ କ୍ରିମିନାଲ ପ୍ରୋସିଡିଙ୍ଗସ୍ ତାଙ୍କର ନାଁରେ ତମେ କୋଉ ବି କୋର୍ଟରେ କରିପାରିବନି ଯୋଉ ଦିନ ଯାଏଁ ସେ ଚେୟାରରେ ଅଛନ୍ତି ଓକେ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ହେଇକି ଅଛନ୍ତି ସେକେଣ୍ଡ ଇଜ୍ ତାଙ୍କର ଏମ୍ୟୁଲମେଣ୍ଟସ୍ ଆଲାଉନ୍ସେସ୍ ଅଲ୍ ଦିସ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ନଟ୍ ଡିମିନିସ୍ ଓକେ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ନଟ୍ ରିଡ୍ୟୁସ୍ ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ ऑफिस जो फैसिलिटीज रे सी एंटर करथिले एटलीस्ट से फैसिलिटीज या तो ताठू अधिका तुमको प्रोवाइड करार अच्छी ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ ऑफिस यू कैन नॉट डिमिनिश और रिड्यूस okay so this is also correct so answer will be C correct statement पचारिछि okay so ये पांचटा ही क्वेश्चन थिला मैं आंसर एटा दे देबी पीडीएफ तुमको okay बाकी कार किसी यदि डाउट नहीं सम पीपल okay तो ठीक अच्छी जदि कार किसी डाउट अच्छी रुह अदरवाइज यू कैन लीव काली क्लास हबोनी नेक्स्ट वीक रे अगेन क्लास हबो मोस्टली ऑन ट्यूसडे ओके ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे या तो फ्राइडे 4 दिन भी हे पारे नेक्स्ट क्लास रे हाँ ये सब यूपीएससी क्वेश्चन ओके आमे गोटे क्लास कौन करवा जी ओपीएससी क्वेश्चन अच्छी पॉलिटी लास्ट 5-6 वर्षर ओके गोटे क्लास तापे नबा जितना आम कोर्स सरजिव सब पॉलिटी क्वेश्चन जितकी भी अच्छी टोटल माने भाविकी चल पॉलिटी 15टा क्वेश्चन तो आसे ओके 14-15टा लाख क्वेश्चन प्रति वर्ष आसे तो जितकी क्वेश्चन हम 5-7 वर्षर टोटल 100टा खंडे क्वेश्चन हम सबू तक गोटे क्लास में डिस्कस करिया गोटे हो कि दुटा हो ओके मु एबे किछि तुमको ओपीएससी क्वेश्चन दउनी जेतला हमर हां करबा जेतला हमर पढ़ा सरी जीव नेक्स्ट आउ केतेटा आज हे गला 5-6-8टा क्लास हे गला आउ मोस्टली 6टा खंडे क्लास रे तुमर सरीबो कोर्स हला 6-7टा क्लास रे तापर गोटे किंबा 2टा क्लास नै कि जत्ती की ओपीएससी रो क्वेश्चन अछि कंपाइलेशन गोटे शुभम सर भी तुमको देइछन ग्रुप रे देखियो हला आज देइछन मत लागुछ मु भी करि थांदी भाबुथली बट मु डिस्कस कर देबी तुम सहित हला गोटे 2टा क्लास नबा ता पे ଆଉ ତାର ଓପିଏସ୍ ରେ ଏତେ ବି ଟଫ୍ ନାହିଁ ଲାଷ୍ଟ 2 ଇୟର୍ସ ରେ ଦେଖିବ କିଛିଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଟଫ୍ ଅଛି ଅଦରୱାଇଜ ଏତେ ଟଫ୍ ନାହିଁ ତ ସବୁ ତକ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆମେ ଡିସ୍କସ୍ କରିଦେବା ଠିକ ଅଛି ଓକେ ସो ଠିକ ଅଛି थैंक यू ସମସ୍ତଙ୍କୁ एंड गुड नाइट ओके स्टडी हार्ड एग्जाम बहुत पाख आसलानी तो डोंट वेस्ट योर टाइम ओके प्रिलिम्स में भलसे पढ़ जो माने मेंस देछ जो अच्छो जदी किए देन स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर इंटरव्यू अदरवाइज भलसे पढ़ापढ़ी स्टार्ट करो डोंट वेस्ट योर टाइम ओके चलो थैंक यू गुड नाइट